diversified. So we can perform advocacy concerning international law, social policy, political strategy, economics, military technology, artificial intelligence, green technology, and of course, culture. So in the global political arena, the developments are taking on increased importance in today's world. Change can have an immediate impact on the economy, business, and society at large. And we need to bring geopolitics, geoeconomy closer to the investment community, corporate decision makers at the time of travel, because we are currently facing an interesting era where year after year, various regional and global events are impacting our global environment. And we need experts, and these experts need to be properly trained. And in order to properly assess biosecurity, you need to have strong methodology. So you need to be working towards improving your skills in order to deliver. You are perhaps young adepts of their theory, social science, and you need some help. So that's why we are here. That's why we will crack on with this today's workshop. In general, the ontology which I advocate in favor of using should be useful to academics, corporate sector, NGO practitioners, politicians, decision-makers, policymakers, ordinary men, and simply everyone. So this is the purpose. I don't believe in science which is produced only for scientists, for some abstract conversations. I believe in science which is interactive, science which is approachable, and science that is for everyone, basically. So that's the ontology that we study, and that's where we stand for, basically. I believe that the main purpose to take part in this workshop is to strengthen your academic credentials, which is very important. I recently discovered as an IR theorist is the fact that contemporary IR theory is not as useful as it should be. Because in the dream world, given that it's invented exactly for such purpose, like explaining global, regional, or local conflict, the IR theory struggles to do that. So we need to readjust and supplement it and help it to get the right order and to basically to improve it before we can use it. So many other scholars engage in a so-called cherry-picking strategy. So this is determined by the strict preferences of the approach. Many IR scholars would eat from one or two branches of this ontological bigger tree which we were discussing today. And I believe that by adopting holistic approach to various dimensions, we can succeed without being open-minded, without exploring the different branches of our tradition. We don't offer a good enough product for both academia, corporate sector, and also non-profits organizations. So, IR theory itself is a branch of political science, which is very well developed, and I'm a strong believer that it is very, very strong theory, but it is unfortunately very divided and very pluralistic. And for this reason, sometimes it suffers from a huge specification and a lack of collaboration between various approaches, theories, and paradigms. And ontology study hopes to change that. The main purpose of this presentation in general would be to suggest to you a different compartmentalization of science, of IR theory. And this compartmentalization will be used in a more approachable manner to explain various ontological foundations that can be challenging because they are very dangerous, but so highly diversified IR theory struggles to approach highly diversified
and losing conflicts. So the best way to do that is to find some logos of mutual understanding between, or multilateral understanding between various approaches. And I'm not talking only about positivist and post-positivist approach, only about some sort of structuralized and non-structuralized approaches. I'm talking about bringing all of the approaches, all of the theories together. So the IR theory will start working in a way that it will be more approachable for you guys. Because I treat the IR theory as a very fluid ontology that can learn from mistakes. So what is ontology? In philosophy, and this is part of metaphysics, and it is a philosophical study of being. It investigates what types of entities exist, how they are grouped in categories, and how they are related to one another. Ontology is randomness. And a quick and useful example of which is how the internet has been shaped and categorized. Heavily relying on the collection of algorithms, alphanumerical addresses of the domain that underpins and interlinks the way in which the information is stored, interlinked, indexed, and accessed in public domain. And basically, IR theory is the same. So it is an ontology. It is a between ontology, which is between scientific ontology and philosophical ontology. So it relies heavily on certain paradigms, certain theories, approaches, and inherently conflicted it happens to be as well. So this ontology, in the way it is shaped now, it resembles the universe because it expands in various directions, in all directions, and it's uncontrollable. So basically, ontology in certain sense would be some sort of synthesis, but it won't be playing the role of hybrid, which will replace the existing hierarchy. No. Ontology in certain sense will just supplement the existing hierarchy, and it will be supplemented hierarchy by creating various ways of communicating between various IR theories and various IR approaches in a way that it will improve the interdepartmental communication. So this is something which I kind of invented, and I've been working with that ever since 2017. And so this you might find it interesting, basically. But I completely get that it still can be confusing. So let us simplify it, because that's the main purpose of my work as an ontologist, is to simplify it so everyone can understand it. So if I was about to explain what I just said to my 4.5-year-old child, I would most probably begin by explaining that it is just like setting off a fascinating journey. And such a journey leads to the world of discovery and discovering the truth about any given object's property, event, process, and relation in the social reality, despite the difficulties that one might encounter during the process. As a matter of fact, ontology is very excited about facing difficulties, because it's only difficulties that teach us how to approach problems. And by doing so, by dedicating enough energy and motivation into what we do, we improve the way we not only comprehend the social reality, but also how we describe it. So in this sense, ontologies never settles for more straightforward or more approachable answers. And yours is always inclined to be excited about digging deeper and deeper to uncover the hidden truths about the nature of given phenomenon. So basically, ontology's primary responsibility is finding the best way to ask the most relevant questions, establishing an explicit, indisputable, and universally agreed upon definition or explanation of the concept, trying to determine a set of assumptions about the world. And currently, when we take into consideration IR theory, and with the current cherry-picking strategy various IR theorists use, this
basically helps them to show the world from various perspectives, like realist perspective, or liberal perspective, or feminist perspective, constructivist, post-constructivist, rationalist, or English schoolish type of perspective. What I'm interested in is holistic approach. So invite every single one of those scholars to the table to start a mature type of science creation and more comprehensive pluralistic approaches, and by showing various differences within the literature of the subject which we have. So ontology in the field of international relations exists, and it has been widely used, especially ever since 1960s. Roy Bashar or Alexander Wentz. Those folks are well known among the specialists in IR theory, but we need more. We need to focus on ontology in order to improve our understanding. So, in the field of international relations, it is used to describe the social reality at hand and describe the actors, their interactions, and the structure of those interactions. The IR theory itself also accounts for a semi-scientific and semi-philosophical comprehension that needs a little calibration to permit our scholars to take full advantage of all plasticity and approach local agents located in the specific time structure from a different, more mature perspective, with a more likelihood of rediscovering more pluralistic sense of their fundamental properties, characteristics, agency, relationship, functions, events, instances, axioms, and possible future superstructures that can be used to supplement all static traditions with more liquid paradigms, experimental theories, and diversified approaches in a more hyperbolic, liquid, and flexible way that should contribute to an everlasting endeavor to develop a more approachable landscape of awareness that will edify and incorporate these elusive and vague concepts that are still essential, forming, emerging, adjusting, and coming to reality. So this is basically the objective of the IR theories, ontology, settlement type of explanations, basically. Our disciplines happens to be the protracted epistemic and ontological confrontation between various isms, paradigms, and traditions. So if you are new to that, you will soon understand that liberals and realists are very conflicted. The constructivists and English school theory lovers, they may not be able to find a common language, but they still believe that they present more holistic approach, but they don't. They don't because they don't take advantage of other methods, other ways of describing the social reality. But together, if we combine our efforts and utilize some of our methodology, we can succeed, in my opinion. So again, if you are new to IR theory, I would like to tell you about one simple division between classical approaches and non-classical approaches. I believe that classical approaches such as realists and liberals are very good sense of theoretical departure. So you can start your great IR adventure by familiarizing yourself with these two. But then it's good to add to this equation basically non-classical approaches. And non-classical approaches are Marxism, constructivism, English school, structuralism, post-colonialism, and many others. So if you combine them, if you start familiarizing yourself with those approaches, you will definitely open your mind to something else, different way of approaching social reality. And the nature of the controversy is that our discipline says more and more about less and less. So we are preoccupied with the internal conflicts, the issues between
isms than actually adjusting them to explanations of social reality. And this is symptomatic to dysfunctional but uncomplicated compartmentalized theory. So that's where ontology constantly comes very handy, because this very concept postulates to avoid embracing single-dimensional explanations and prioritizing complexity over simplicity. It suggests avoiding well-trodden explanatory paths and entering the most challenging ones in an attempt to serve betterment to meet tomorrow's demands, basically. So this is the objective at hand. This ontology also postulates building an empirical bridges mutual understanding instead of walls of divisions to approach our research in more constructive manner. So, and by sticking to this new compartmentalization and by supplementing the existing IR theory with ontology and understanding, we can embrace more systematic, interdisciplinary and contemplative mode of IR-related deliberations that hopes to convey the essential meaning of the given research area by bridging the division between the main conceptual, methodological, and analytical differences between what happens to be a collection of rival approaches, theories, and traditions that should be better integrated within the IR theory. So again, interconnecting is the key to finding the way to describe modern conflict. Local, regional, or global confrontations would be better described thanks to ontologies and understanding. Again, this is something which you might find interesting because basically the main purpose of this ontology and understanding is also to add the X factor to the research, to give you a couple of tips and suggestions and recommendations how you optimize the way you conduct your research. You can do it by making yourself clear, understandable, and by following sets of structure, by providing your hypothesis, and by befriending, mastering methods and approaches. So imagine yourself that you meet the X Factor judges like Louis Walsh, Sharon Osbourne, Simon Cowell, Teresa, Gary Barlow, Rita Ora, and to the best of my knowledge, those folks are very patient, so you have limited time to persuade them to present yourself as a future X Factor star. And imagine yourself that you meet X Factor judges who assess your ability to present your research, because that's what it comes down to. In order to be a good scientist, you need to have very strong methodological and so you need to have very strong methodology. So no one can question you on the methods you use, basically. So in order to do that, now let us imagine that we have limited number of time to do so, to describe the IR theory as it is. Okay, folks, so basically imagine just 8.2 seconds, because this is an average human intelligence from these days in the era of Facebook and Instagram, where people scroll. So let us imagine that we need to persuade someone that the methodology instead of understanding is better compartmentalization than IR theory as it is now. So let's switch on the timer. We have 8 seconds. So basically, ontology instead of understanding is more respectful, more holistic, and more approachable. 883. Well, I settled for that. More holistic, more understandable, and more approachable. And we try to attain better clarity in what we do. This argument alone should persuade you to try this and to try to compare ontologies of understanding and IR theory, basically. Because ontologies of understanding doesn't revolutionize science, it just offers a little path to evolution, because it uses the achievements of IR theory and compartmentalizes it in a little bit better way by finding the best possible methods, best possible approaches, and by interlinking them
and indicating to various scholars, oh, you can do something better by using, for instance, descriptive method, or by using sociological investigation, or by approaching this, by using microeconomy or microeconomy to this type of explanation, by using statistics to show something in a better way. So this is my main point which I would like to encourage you to do at the moment. We basically argue that IR theory has what it takes to be appealing to the young adepts of social science. It's intellectually stimulating, it's sexy, and then it happens to be quite complicated. This complexity makes it very interesting, but complexity cannot be bringing us down. It should be helping us. So that's why we use ontology to supplement our IR theory. So this IR theory is even stronger than it used to be. So this is the main objective of this presentation. So basically what I'm saying is that practice and theory should be working together. The theorists who creates theory and who describes social reality should always remember that there can be a practitioner who will read his papers or read his book and try to apply his research, his ideas to reality, into fixing the world problems. In essence, digging deeper into your methods and methodology will definitely help you to succeed in your academic endeavors. But the essence of that is to be as effective as possible, just to find a connection between theory and practice in the real life policy-making situation that will make it appealing to the practitioners. Imagine yourself this moment from Jerry Maguire movie, and that you need to communicate something in the theoretical manner to practitioner. You need to find a way to meet certain common objectives. So we need to help you to help me, and help me to help you, basically, if it makes sense to you. In essence, ontology is not only complementalization, it's not only supplement of IR theory, it seeks to bring to the table the most relevant debates and interrelate with political philosophy to give us chance to approach this know-how as a new horizon of investigations. So this know-how is quite substantial, as a matter of fact. So I can tell you that, but ontology is understanding and happens to connect towards the IR theory, both from theoretical and practical to philosophical work, because there's a lot of philosophical insights which are used in IR theory, and the compartmentalization of these philosophical insights are not approachable enough to young, especially to young adults of IR theory. So by interrelating them, by finding different horizons of investigations, we can definitely succeed and approach this world which is increasingly more elusive, more fluid, and more unpredictable than ever before. Have you ever thought about COVID, global pandemic before 2021? That's something which was unimaginable. Similarly, in Europe especially, we wouldn't ever say that Russia would attack Ukraine in 2022. That's something which liberal IR theorists would say, oh, that's crazy, and yet it happened. So today, we live in the world which is completely unpredictable, and it changed. The events of the world change within seconds. The way the global architecture of power is evolving is completely surprising. The traditional realist theorists, for instance, would you say that BRICS will become so powerful some 5-10 years ago? No, you wouldn't, but yet the BRICS just adopted new policy of accepting more member states. So this is something which you need to take into consideration. Remember this Polish national based in Sofia, Piotrzak, who told you, oh, you know what? The IR theory is not as applicable as it used to be. So we need to do something about it. And it will be your generation who will take part in 7th or 8th grant debates.
and you need to be ready for that, because the world needs you to be ready. We need you to offer us good insights, because my generation, we will take over from the old generation professors in about 5-10 years, but you will take over from us in 7 or 8 years, because the global reality at hand is changing rapidly, and the new generation of scholars are basically more and more competitive than the older generation. Well, ontology studies obviously can help you to attain that as a matter of fact, because it's in perpetual process of transition, forming and adjusting to the emerging circumstances. Basically, you can succeed in today's global reality. You can succeed in spreading global conflicts and global solutions by being ready to be flexible, by understanding what's going on, and by finding new ways of approaching them. And this is something which ontology is offering this. It is a new compartmentalization, it's largely hybridized, and that serves several supplementary roles and supporting evolutionary functions for each IR approach that ultimately emerges some of the biggest chunks of the IR theory and some of the most interesting discoveries in the more approachable manner by focusing our attention to the analysis of all social structures pre-existent and emerging. Ontology's biggest strength is the fact that it encourages actually interdisciplinary discourse and the pursuit for clarity that can change the general landscape of awareness by emerging new respectful attitudes towards other scholars and philosophers that account for a very flexible model that helps to formulate more precise and more relevant questions, so it's easier to approach the scholarly text with the hermeneutical precisions that helps us to look at any process or pattern through the prism of multitude of approaches brought to our attention simultaneously. So this is something which you might find useful. We can strengthen our research in this respect by relying on all available historical, statistical, macroeconomic, and geoeconomic data to increase the likelihood of successful approach in modern conflicts and by extension helping to find the best possible solution for them. One very simple example, Italian political scientist Giovanni Sartori famously that men who realizes the limitations of not having a thermometer should still be able to say a great deal about the weather and temperature simply by relying on slightly more vague sets of observations, merely by stating that it is hot and cold, warmer and cooler, and can describe the reality at hand. This is essentially a step of measuring variables logically for finding a relationship between them. And this spirit of thinking can also be adopted in conflict management. It is our responsibility to use all of the methods that are available to describe the social reality at hand in the most approachable manner. So basically, imagine yourself that you don't have a thermometer and you cannot check your temperature. So you can say, oh, your forehead is hot, it's warm, and your forehead is normal. So this is the way of doing things the ontologists that understand this basically advocate in favor. Basically, we know that IR is so complex, so convoluted, and it's difficult to approach, that we need to find new ways to approach, to use the best methods there are from various perspectives. My recommendation is to follow your intellectual curiosity and use what you have, what we created over the course of the last 100 years in the most approachable manner and describe it in the best possible way you can. And that's how you succeed as a scholar who is very particular about his or her methodology. Ontology is put forward to encourage us to take part in different kinds of intellectual journey altogether, basically.
It's consistent with the following: one's intellectual curiosity, no matter what. It advocates adopting a more contemplative, evolutionary manner of investigation, perpetual self-improvement, collaboration, flexibility, and openness to different interdisciplinary traditions. It aspires to move our understanding beyond the traditional status quo type of experiences. It is dedicated to overcoming shallow, superficial, and one-dimensional explanations by embracing a self-perpetual process of continuous attempts to befriend the wisdom, which in turn offers a unique intellectual stimulus to accelerate the pace of independent research. So the process of befriending wisdom is the process which is known as philosophizing. So in essence, I encourage you, social science thinker, to basically start philosophizing about certain things, either in a positive manner. Don't overthink stuff, but try to approach something from different perspective. If something doesn't serve you, you need to find a way to prove your hypothesis correctly, prove the plausibility of your hypothesis. Sometimes it's difficult. Sometimes hypotheses are wrongly formulated, so you cannot do that. But you need to try different methods, different approaches, and different theories to try to investigate the social as it is, basically. It is pluralistic. It cannot be genuinely attributed to or monopolized by one scholar, independent of originator. So basically, you cannot say that Piotrzak invented ontologies. No. To the best of my understanding, every serious scholar develops their own ontology that leads them to more mature scientific discoveries in the field of their interest. My ontology, instead of understanding, will be different than the ontological mode of thinking adopted by other IR thinkers and political philosophers, for they will ultimately differ from one another, and they should be entitled to develop their own states of economy, their own process of auto, STEM, methodological formations. Each of these compartmentalizations will have its own unique proportion of interdependence that will help you to approach various concepts, processes, and ideas in various specific manner, some of which would be understood only in hindsight. So sometimes you just understand something from the perspective of hindsight. So you will understand certain developments in the future, and that's the beauty of it, basically. There's plenty of opportunities of conceptualization of universal solidarity. And it can help us to transform international relations theory into focus on interdisciplinary of all with all that is based on mutual respect and understanding, pursuit of truth, clarity, academic excellence, and broader accountability and transparency. So basically, the new wave, perhaps the fifth grand debate, suggests to adopt IR theory. Such approaches as, for instance, Egyptian concept of math, the principle of order, which informs the world's creation and how it might be instrumental in understanding African norms of knowledge. It also suggests to add the Islamic Ummah and Sheikh Khalsa plans and the reconceptualization of universalism and solidarity. Subsequently, we can try to import non-derivative and non-exceptionalist global minor thought from the Sufi philosophy of the 13th century poet Mohammed Rumi. We can also engage in much deeper examination of the Chinese IR exploration of distinct worldview that draws significantly from ancient Chinese thought and dialectics, as well as philosophers such as Confucius. Next, we can also try to start listening to Latin American voices in international relations. All of it is important, and traditional, classical IR approaches are very, they are not interested in engaging in this debate. And we have to, in order for IR theory to be strengthened, we need to make sure that fifth grand debate,
which is finally inviting these voices to the policymaking deliberations are stable. And finally, we need to take into account this diversified, pluralistic world we live in. Not only the traditional approaches, but everything and everyone basically should have a chance to contribute to the IR theory. And that's also the way ontology in set consenting operates. The use of ontology in set consenting so far, I think that I'm the only scholar who is advocating in favor of ontology in set consenting. You can find some relevant information about it in my recent publications on behavior intervention compared to of IR theories that was published in 2021. The next publication that will approach it in a more structured manner will be dealing with different functions of global importance. This is broader work, at least 30 chapters will be published in this little edition. Some professors from Europe, distinctive university, also took part in this initiative. So if you think that you might be interested in trying to find our project and dealing with regional conflicts of global importance, still accept some chapter submissions. So if you think that ontology is concerning would be an interesting concept for you, try to compare it, analysis in a chapter, and we will consider it for both publications basically. Essentially, ontology is understanding will allow you to compare and advise various approaches within the IR theory in a more approachable manner. So the schools such as realism, liberalism, constructivist English school, Marxism, rationalism, post-structuralism, and post-colonialism, feminism, they use various methods, they use various ways of approaching things, and they are constructed in various manners. They focus in various ways. So ontologies of understanding will try to find the common denominator and common ground for all these approaches to be sat at one table, policy table, and it will give the voice to all of these approaches to bring various other emphasis or regarding ongoing conflicts or ongoing confrontations, wars. And by doing so, by being so pluralistic and by being so open-minded, basically, ontologies constantly can achieve more than the way the current IR theory is shaped, basically. So by showing this diversity of approaches and their responses to various events, we can show more, increase demand. Basically, we ask what would happen if you took advantage of all of those approaches and try to wear the shoes of different scholars from the same discipline, and by doing so, we would definitely have a different way of approaching things, and that would allow us to strengthen our research. So, my recommendation to you, young adepts of IR theory and social science, is to basically take into account the approaches which you, from the man. For instance, if you are a realist thinker, or you consider yourself a realist thinker, try to think, okay, so what would feminists or radical feminists say in this situation? If you are a constructivist, say, okay, so what would Marxists say? If you're a Marxist, ask yourself, okay, so what post-colonialism would say in this respect? And by framing this debate in this manner, we can show more again, I suppose. I don't think ontologies understanding will definitely be able to strengthen your explanatory powers, and my recommendation is trying to use it in practice. What I can say is that if you have any questions, you can definitely contact me, and I will be more than happy to assist you further. Because this is my strong
strongly believe that ontology is an authentic use of these concepts and it can add extra value to your research. And our explanation of the global reality at hand would basically be strengthen the powers of you as a researcher, because you would be able to apply various epistemological and methodological insight into your practical analysis of multiple conflict resolution strategies, identify a number of issues that shouldn't have been missed in the first place, and we will be able to explain the complex world of international relations, organized violence, regional cooperation in a more approachable manner. And ontology is understanding can be also used to approach the great debates in IR theory in a more approachable manner as well. I've tried it recently with my students from Ariane University in Indonesia. You can find the video recording of the lecture, so I'm gonna go into details of every single great debate, because the first debate started between 1930 and 1940. It was the debate between traditionalists and idealists. The second debate between behaviorists and traditionalists in IR theory. The third grand debate happened in the 1980s between neorealism and neoliberalism and many other approaches. So I refer you to a lot of literature which is written about these approaches. The fourth great debate in international relations emerges in the early 2000s. There's various ways of approaching the debate between positivism and post-positivity. Again, you can stop this recording and you can read it in full. Heading towards fifth grand debate, which is the most recent debate that emerged in the 2010s and is centered around how to respond to the challenges posed by the global inequality, climate change, and other transnational issues that require collective actions. Then the fifth debate is associated with the complexity theory, which comes from an interdisciplinary field of study that provides a valuable framework for understanding the challenges of global governance in a rapidly changing world by focusing on understanding of complex systems and the emergence of new forms of governance that can be composed of multiple interacting elements exhibiting non-linear and unpredictable behavior, basically. And what we would be the most interested in would be in the future, the 6th, 7th, or 8th, or even 9th great debate in international relations, because ontologies can find a way to approach it. There are no widely accepted 6th, 7th, 8th, and 9th debates. It is our generation and your generation who will basically crack on with this task of approaching it. They have not yet emerged, but they are likely to emerge soon, and they will relate to the way the IR theories responds to the issues related to the impact of new technologies, artificial intelligence, the issues related to cybersecurity, cyber threats, and high speed of development in anonymous weapon systems, pandemics, and the rise of non-state actors, asymmetric warfare, the changing nature of conflicts, and the use of hybrid tactics such as disinformation campaigns related to climate change, deforestation, water shortages, environmental degradation, and various issues related to social change, inequality, insecurity, and modern conflict. We will probably have to deliberate on the changing balance of power in the international system and deglobalization, especially after the events of 24 February 2022. The new Cold War, the BRICS countries who are basically, according to many scholars, are likely to take over the world in the future. Of course, not in the short term, but you never know. And in the long run, we might be discussing the BRICS, the new BRICS-shaped international system. So the question remains, how are these
IR-FUUAST. Where are we going in IR-FUUAST? We find ourselves in the 21st century where everything is interchangeable. Ontologies and understanding wants to be at the forefront of those debates and to help elaborate a practical blueprint that will allow us to respond to the complex challenges and opportunities of the 21st century. To achieve that, we hope to supplement the existing IR-FUUAST with various approaches, such as, for instance, Haber mentioned, deliberative democracy to attain a new horizon of investigations. Hegelian dialectics properly recollect the information that has escaped our attention in the previous phases of this project. The Levination of ontology of the other always compartmentalizes the available approaches, theories, and how in relation to the living individuals that expect their knowledge to be as clear, as approachable as possible. Bauman, liquid modernity, and the medium deconstructive plasticity brings together as many seemingly unrelated approaches as possible to ensure that this project is as holistic as approaches. But we need your help. In order for ontologies to succeed, we need you, new adepts of IR-FUUAST, new social scientists. We need you to be excited about methodology. We need you to be excited about IR-FUUAST. We need you to contribute to this challenge because this is the challenge of tomorrow. We need you to be part of the 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th broad grand theory, grand debates of IR-FUUAST because the world belongs to you. And today in Karachi, tomorrow in Sofia, and the day after tomorrow somewhere in Washington, you can change this world according to your life, basically. So be with us and stay tuned because this is something which we will definitely bring to reality. If you like today's presentation, and if you are interested in IR theory, you are interested in ontology assembly, and you have some questions, don't hesitate to contact me. You can either email me on Piotrzak, that's my surname, _IR for Internet Relations, at hotmail.com, or you can find me on LinkedIn, and I will be more than happy to assist you further because today and tomorrow belongs to us. So best regards to you guys, all the best from Sofia and Gaia. If you think that my approach to IR-FUUAST is likable, I can also meet you in Karachi. I would love to visit Pakistan. It was a pleasure to address you today, and stay tuned. This was all the _IR for Internet Relations. thank you, Professor. This was Dr. Piotr from Sofia University, Bulgaria. He was inciting us very comprehensive manner with the debate of ontology, which is a very important topic as far as research method is concerned. If you have any questions, please note down his email. He was supposed to join us live online, but due to his some engagement, he sent this recorded lecture in the morning. So please note down his email. If you have any questions, please send him email and he will respond accordingly. Okay, so our next presenter is Dr. Faisal Javed. He is Assistant Professor at Department of International Relations. He is also Deputy Director of Piotr University of Arts, Science and Technology, Karachi. His topic is how to do literature review through artificial intelligence applications such as Piotr and Steve applications. A big clap for Dr. Piotrzak. Sort of activities.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल जावेद है और मैं ने जैसा बताया आपको कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ IR में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और डिप्टी डायरेक्टर जो है वो यूनिवर्सिटी में का डिप्टी डायरेक्टर भी हूँ। आज जो लेक्चर है हमारा हमारे 4 लेक्चर थे। सुबह आपने लेक्चर सुना, हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे एक्चुअली 11 आवर्स ही हैड सम एंगेजमेंट, तो उन्होंने हमें रिकॉर्डेड अपना लेक्चर भेजा, तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं तारीख में जैसे आपको अकॉर्डिंगली बताया। सो माय लेक्चर स्पेशली जो आज लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं और जो न्यू टेक्निक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हैं, उसका एकेडमिया के इस्तेमाल है। हाउ टू यूज in academia, how to write your research paper, how to write your dissertation, especially MPhil and PhD level. Actually, ये टेक्निक्स पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में कोई अनएथिकल काम नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि आप हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसमें भी आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, बटन पुश करते हैं, कोई भी फॉर क्विकली आंसर आप ले आते हैं चीजों में। तो उसमें अनएथिकल तो शुरू में लोगों ने कहा होगा क्या ये पता नहीं क्या है, लेकिन उसके यूज वक्त के साथ साथ जब उसका यूज बढ़ता गया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल हम इससे पहले भी होता रहा है। एकेडमिया में ऐसी ऐप्स स्पेशल लिटरेचर रिव्यू के हवाले से वो यूनिक ऐप्स हैं। हमने चैट जीपीटी बार्ड का नाम सुना हो, लेकिन चैट जीपीटी बार्ड आपको पूरा लिटरेचर रिव्यू नहीं करके देता, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर देगा, आपको कुछ आइडियाज दे देगा, कुछ चीजें आप कर देगा, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लिटरेचर रिव्यू जो हमारा थीसिस का मेन पार्ट होता है वो हम कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वक्त के साथ साथ ये चीजें जो है तब्दील हुई हैं। मेरी इस लेक्चर के साथ दाशा वाला से हैं, ये मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे साथ एमफिल भी कर रहे हैं, ये मेरे साथ सपोर्ट करेंगे मुझे। और जहाँ पर हम दोनों इस लेक्चर में इसका पार्ट हैं, तो जब मैं प्रैक्टिकली उसमें आऊंगा तो दाशा हमारे साथ जो है कोऑर्डिनेट करेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे लेक्चर के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जस्ट आपको ये जस्ट ब्रीफ करना बैकग्राउंड्स, सेकंड पार्ट प्रैक्टिकल है एक्चुअली कि हाउ टू यूज द एप्लीकेशंस। मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन और आप चाहे उसकी पिक्स ले लें, नोट कर लें, वो आप यू तो जब उसको यूज करेंगे देन आप उसको लर्न करेंगे। अगर आप बोलेंगे वो मुझे फौरन से सारी उसकी टेक्निक्स आ जाए, ये यूज के ऊपर है कि आप कितना यूज करते हैं, कमांड कैसे करते हैं, प्रॉम्प्ट्स कैसे करते हैं आप, ये आपके ऊपर है। वो आप लर्न करेंगे जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, एकेडमिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो छोटा सा डिफाइन किया है, AI is the ability of machine to perform tasks that are typically associated with human intelligence such as learning and problem solving. तो ये तो एबिलिटी है मशीन जो आप बेसिकली आपसे associated है, and AI research has been highly successful in developing effective technique for solving a wide range of problems from game playing to medical diagnosis. AI का इस्तेमाल दुनिया में हर फील्ड में होता जा रहा है। इवन मेडिकल में इतनी तब्दील होना भी चाहिए कि आप मेडिकल के जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं आप कभी जाएं लेबोरेटरी में तो वो मैनुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब तो मशीनें आ गई, बस जस्ट आपने ब्लड देना है और फ्यू आवर्स के बाद आप डायग्नोज हो जाएगा प्रॉब्लम क्या है। अब तो सीटी स्कैन पता नहीं क्या क्या चीजें मेडिकल बहुत तेजी के साथ जब AI का इस्तेमाल हुआ है तो बहुत सारे लोगों को उसने रिप्लेस भी करेगी। बहुत सारे मेडिकल टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जगह शायद AI के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। इवन आपको जितने डॉक्टर्स हैं आपके जो अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज और चीजों को रिपोर्ट लिखते हैं, इसकी भी जरूरत मुस्तकबिल में नहीं होगी, बल्कि आपका AI जो है वो ऑटो जनरेटेड जो है उसको एनालाइज करके जो है वो कर रहा होगा। आपने गूगल की सेल्फ ड्राइव देखी होगी। सेल्फ ड्राइव भी जो कार है गूगल की वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अमेरिका वगैरह बहुत तेजी के साथ इस्तेमाल हो रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आपकी है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है उसका वर्चुअल असिस्टेंट तो वो इसका तो जब से AI है वर्चुअल असिस्टेंट तो हर आप जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान में नहीं बाहर में जितनी पब्लिक है प्राइवेट दोनों, इवन जितनी मल्टीनेशनल कंपनी वर्चुअल असिस्टेंट आपको अवेलेबल मिलेगी। आप उन क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल फीड क्वेश्चन है क्योंकि आपको रिप्लाई करते हैं, तो ये तो बहुत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है बहुत तेजी के साथ। और फिर कहीं जाकर जहाँ वर्चुअली आपको वो चीजें नहीं बता पाता देन वो कहता है आस्क यू क्वेश्चन, तो हम आपको दे देता है कि ये आपकी समझी है जो हमारी कन्वर्सेशन है। ओके आपको ये कोई ना कोई आपको थोड़ी देर में आपको आपसे रब्ता करता है, देन वो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं है कि
कि वो बहुत सारे लोग रख लें कॉल सेंटर में, या बहुत सारे लोग जो है वो असिस्टेंट के रख लें, सो वर्चुअल असिस्टेंट में भी वहाँ पर भी रिप्लेसमेंट बहुत तेजी से हो रही है। मेडिकल डायग्नोसिस मैंने बताया आपको कि मेडिकल के अंदर तो बहुत इतनी उसकी जरूरत भी है, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स हैं उस हिसाब से डायग्नोसिस के हवाले से। अब यकीनन ओपीडी या जो इन पर्सन जो हमारी वो तो शायद नहीं चेंज हो, लेकिन बाकी जितनी डायग्नोसिस की चीजें हैं उसके अंदर मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सबसे लास्ट में पर्सनलाइज लर्निंग, ये स्टूडेंट्स और एकेडमिया के लिए है कि ये जहाँ लर्निंग की बात हो रही है वहाँ आपको कुछ हेल्प, कुछ एज ए रिसर्च असिस्टेंट आपको मिल जाता है। तो एआई जो है किस्म की आपको एक रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च फैसिलिटेशन ही फ्राहम करती है। जैसे आप मैं कहीं अच्छे लाइब्रेरी पर चले जाएं जहाँ जो शहर में मौजूद हो, तो अक्सर लाइब्रेरियन को पता है लाइब्रेरी में जितनी चीजें होती हैं उनको सब पता होता है लाइब्रेरी में। और अच्छे लाइब्रेरियन का मतलब मीन बाय ये है कि अच्छे लाइब्रेरियन को की बुक्स लैंग्वेजेस भी आती होती हैं, वो कुछ एरियाज के एक्सपर्ट भी होते हैं, उनसे पूछे। इवन मैं in Colombia during 2016-2017, I met a librarian. I think he was in charge of Russian section. वो हर चीज रशियन ही जानता था, रशियन लैंग्वेज, रशिया की बुक्स, रशियन लिटरेचर चाहिए, उसके स्कॉलर्स को चाहिए, यानी कि प्रोफेसर से ज्यादा वो जानता था। मुझे लिटरेचर की बुक्स चाहिए तो मैंने उससे कोऑर्डिनेट किया, उसने मुझे बताया कि जनाब ये इतनी बुक्स हैं, ये टॉप 5 प्रोफेसर हैं। तो लाइब्रेरियंस तो इस तरह का। अब ये चीजें जो है आपको डेटाबेसेस ने उसको रिप्लेस किया है, और डेटाबेसेस के अलावा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप ने उसको चेंज किया। सो एआई जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल बहुत है, और उसके साथ साथ ये डिबेट बहुत तेजी के साथ हो रही है कि एआई जो है वो बहुत सारे लोगों का अप्लाई कर देगा। नो डाउट आप देखें जो चीज आप देखें, आज हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते कि मेरे पास मोबाइल फोन या लैपटॉप ना हो। मतलब समटाइम लैपटॉप खराब हो जाए, जो ज्यादा काम करते हैं रिसर्च का, तो वो आप अनईजी फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि लैपटॉप मेरा चल नहीं रहा, खराब हो गया। मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें जो है आपकी, आप इसके बगैर नहीं रह सकते। इसको साथ आपको आगे बढ़ना होगा, और आप इसको जरूरी नहीं आप सब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आप सोशल साइंटिस्ट हैं, आप मैनेजमेंट साइंसेस के कोई किसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपको इसको लर्न करना है। अगर आपने लर्निंग नहीं की इसकी, आप इस सोसाइटी में, इस रिसर्च की फील्ड में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप अच्छे रिसर्चर तो बन सकते हैं, आप बुक्स पढ़ लें, बुक्स रीडिंग करते रहें, आप प्रोफेसर 2 बड़े हैं। इवन मैं एक हार्वर्ड के प्रोफेसर से मिला, ये बात बता रहा हूँ आज से 7-8 साल पहले। वो प्रोफेसर बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर थे, वो ना लैपटॉप यूज करते थे, वो ना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे, वो बस वो नहीं करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे, ये आप सोच भी सकते हैं इसके बगैर आप क्या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करें, डेटाबेसेस का इस्तेमाल नहीं करें। वो हालांकि वो ह्यूमन की मिशन में शामिल थे, जब वो कोसोवो के अंदर बहुत बड़ी जो है वो मुसलमान हुआ, वो तो उसमें मिशन शामिल थे। वो एक लेक्चर था, वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी, तो बता रहे थे किस तरह उन्होंने फील्ड विजिट्स किया और कैसे उन्होंने सैंपल जमा किए, पूरी रिपोर्ट उन्होंने बनाई और उन्होंने पेश की। तो ऐसे लोग भी थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसे लोग जो है वो शायद वो आगे रह नहीं पाएंगे, वो जगह नहीं बना पाएंगे। लिहाजा ये जरूरत है इस बात की कि आपको इन एप्स को, इन चीजों का इस्तेमाल भी उसी तरह आपको करना है और उसको लर्न भी करना है। और ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, इंटरनेट पे सारी मालूमात मौजूद हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितनी एआई की एप्स हैं वो जहां आपको फैसिलिटेट कर रही है, वहां फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, सब लोगों का जीमेल अकाउंट है। नॉर्मली गूगल जो है वो 15 जीबी आपको एक्सेस देता है। ये जीमेल जो है उसे कहते हैं, उसके अंदर पैसे मांगता है उस पर। ये चीजें होंगी वक्त के साथ, इतनी ये ऐप्स हैं जो फ्री वाली अवेलेबल है, अब वो पैसे लिए करेंगे आपसे। लेकिन उन्होंने पैसे कमाने हैं, उन्होंने जितनी फैसिलिटीज आपको फराहम करनी है उसके अगेंस्ट उन्होंने इनकम नहीं करेंगे, तो उनका बिजनेस भी कैसे चलेगा। वक्त के साथ साथ आपकी जरूरत बन जाएगी सारी एप्स, और उसके बगैर आगे नहीं चल सकेंगे। लिटरेचर व्यू जो है नॉर्मली आप सबको हम एमफिल पीएचडी में रिसर्च मेथोडोलॉजी में डॉक्टर आरिफ जो रिसर्च मेथड पढ़ाते हैं। लिटरेचर व्यू मतलब उसकी इंपॉर्टेंस से तो कोई आप इनकार नहीं कर सकते कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और लिटरेचर व्यू की क्रिटिकल एनालिसिस है ऑफ अवेलेबल रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट एज it helps to establish the context of study and identity gaps in the existing knowledge। ये तो हम स्टूडेंट्स को बीएस में फाइनल ईयर में भी पढ़ाते हैं, फिर एमफिल में दो सेमेस्टर के अंदर रिसर्च मेथड्स पर बड़ा फोकस करते हैं
ये गैप्स को फिल करना है, रिव्यूज करने हैं, आपको डेटा जमा करना है, डेटा कलेक्शन करनी है आपको, और ताकि जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग लिटरेचर भी होगा, ऑफ कोर्स आपका जो है वो फाइंडिंग्स, आपकी सब चीजें जो स्टडी जो है उस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर आपका लिटरेचर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपने बहुत सारा स्टडी नहीं किया, इट्स मीन कि आपकी स्टडी की फाइंडिंग जो है, आप रिकमेंडेशन जो है वो उतनी वीक होगी। तो लिटरेचर व्यू जो है वो उसके बगैर स्टडी के अंदर मेन पार्ट ही लिटरेचर व्यू है। अब लिटरेचर व्यू हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग जिसमें वीक हैं, हम अपने इस पाकिस्तानी सोसाइटी में वो वीक्स हैं, हम लोग फील्ड विजिट नहीं कर पाते हैं, प्राइमरी सोर्सेज नहीं जमा कर पाते हैं, हम लोग 100 इंटरव्यूज जमा नहीं कर पाते। मेरे एक दोस्त हैं, वो जर्मनी में किसी टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करते थे, पाकिस्तान से वो तो मैं आपसे गेस्ट एज अ गेस्ट रिसर्चर काम करता हूं, तो पाकिस्तान में आते हैं तो कुछ रिसर्च एक्टिविटी तो उनके साथ मिलकर करने का मौका मिलता है, तो कुछ सीखने का मौका मिलता है। वो पाकिस्तान में जब भी आता है तो एक रिसर्च पेपर पे काम करने के लिए आप सोच सकते हो कितने 100 इंटरव्यू जमा करता होगा। इन मोर देन 100 इंटरव्यू जमा करता है एक रिसर्च पेपर के लिए, सिर्फ एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए। अगर 300 या 400 इंटरव्यू जमा करेगा तो मुझे उसका डेटा वो एक पूरा एक सॉफ्टवेयर है पूरा, वो सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, काफी 100 यूरोस का है। मुझे बता रहा था मैंने इस डेटा को कैसे जमा करता, 400 इंटरव्यूज हैं, मैंने 400 लोगों से जमा किए नोट्स में। नॉर्मली अगर मैं आपसे डिस्कस करूं इस टॉपिक पे, एक्सपर्ट हैं आप, और मिलते किससे से, फॉर एग्जांपल उसको सीपेक में एग्रीकल्चर में काम कर रहा था, हाइब्रिड राइस में। अब हाइब्रिड राइस में जो बिजनेस करते हैं वो उनसे, उनके ओनर से मिल रहा था। हाइब्रिड राइस में जो फार्मर्स काम कर रहे थे वो उनसे मिल रहा था, उनसे इंटरव्यू कर रहा था। हाइब्रिड राइस में जो सीड प्रोडक्शन करते हैं वो उनसे मिल रहा था, जो फार्मिंग करते हैं, जो पूरी उसमें प्रोडक्शन में शामिल हैं, अब उन 400 जब इंटरव्यूज करें, फिर एनवायरनमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इंटरव्यूज करके, अब हर एक से जब इंटरव्यू करते हैं तो इट इज इजी फॉर यू, यू कैन राइट 3 to 4 पेजेस, इट्स नॉट प्रॉब्लम फॉर यू। जब 300 को आप मिनिमम 3 पेजेस लगा लें आप, तो 900 पेजेस आप डेटा प्रोड्यूस कर लिया, डेटा जनरेट कर लिया आपने। ये तो उनके लिए तो अवेलेबल है, उनके पैसा है, फील्ड रिसर्च कर लिया। अब हम पाकिस्तान में आते हैं, इन फैसिलिटी से हम जो है महरूम हैं। ये हमारी बड़ा जो है हमारा बैकड्रॉप है कि हम ये चीजें नहीं कर पाते। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए जब पाकिस्तानी सोसाइटी में काम करते हैं तो हम बहुत सारी जगहों पे ये चीजें कर सकते हैं। अब कराची में अगर आपको डेटा कलेक्शन करनी है किसी चीज के ऊपर तो इट्स इजी फॉर यू, मतलब नॉर्मली हमारे पास इतना ट्रांसपोर्ट एक्सेस होता है कि हम शहर में बहुत सही जगह, लेकिन अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो वहाँ ये प्रॉब्लम है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के उस फील्ड के एक्सपर्ट्स अवेलेबल, किसी रशिया में काम करना है तो पूरे पाकिस्तान में हाउ मेनी एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान, आई थिंक 4 to 5 बहुत मुश्किल से हम इस तरह। और भी अगर आईआर की फील्ड्स हैं कुछ किस के मैं बात करूं सेंट्रल एशिया पे, कॉकेशिया पे, लैटिन अमेरिका पे, तो आपको बहुत कम एक्सपर्ट्स मिलेंगे, तो कितने इंटरव्यूज करेंगे आप। तो लिहाजा फिर उसमें मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स सजेस्ट करता हूं कि अपनी स्टडी को रिलेट करें पाकिस्तान से, जिससे मर्जी करेगा। दुनिया भर में भी ये होता है कि वो अपने कंट्रीज के ऊपर बैठ के काम कर रहे थे, लेकिन उनको फंडिंग मिल रही होती तो फील्ड विजिट करते हैं, वो जाके वहां डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं रेलेवेंट। उसके बाद जो है वो इससे क्या होती है, आपका लिटरेचर व्यू मुझे बताएं या प्राइमरी सोर्सेज क्वांटिटेटिव डेटा जब जमा कर रहे होते हैं तो आपकी फाइंडिंग्स भी बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जब आपका डेटा कलेक्शन से भी वीक होता है और प्राइमरी सोर्सेज में नहीं होती हैं या उसमें क्वालिटी वर्क नहीं होता है, तो बस वो टेबल रिसर्च हो सकती है जिसको हम कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम टेबल रिसर्च कर रहे होते हैं, कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं नॉर्मली सोशल साइंसेस के अंदर, और तो ये उसकी वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस, वो चीजें सब उस पे इम्पैक्ट डाली होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के हम लेकिन उसके बावजूद भी प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्सेज इंटरव्यू जितना इम्पोर्टेंट है उसके साथ-साथ सेकेंडरी सोर्सेज आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट योर लिटरेचर रिव्यू, बिकॉज़ you should know about how many authors या how many articles are available या existing material available before you, वो आपको पता होना चाहिए आपको। लेकिन आजकल के जो डेटाबेसेस मौजूद हैं वो बहुत उन्होंने आसान कर दी है चीजें आपके लिए कि आप क्लिक करें, आप क्लिक कैसे करना है, कहाँ जाना है, ये प्रॉब्लम है। गूगल पे आप जब करते हैं, गूगल पे आप लोग ये लिखे ना एप्पल लिखे, एप्पल खाने वाला एप्पल, तो आप लिखे तो वो एप्पल वो आ जाता है, एप्पल कंपनी आ जाती है, उसके सबसे टॉप पे हो जाता है। हाँ एप्पल तो आना चाहिए। तो ये मार्केटिंग के टूल्स हैं जो अक्सर गूगल वाले यूज करते हैं उसके अंदर, तो वो जिसके जो चीज रिसर्चर को चाहिए वो बहुत नीचे चली जाती है। आप कभी गूगल करें, गूगल पे अपने कीवर्ड्स लिखें या अपने वेरिएबल लिखें जो आपके रिसर्च वेरिएबल हैं, तो यू सर्च, आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो काम की चीजें वो
5 to 6 7वें 8वें पेजेस पे, समटाइम लास्ट पेजेस पे, क्योंकि मार्केटिंग करने वालों ने पैसे सर्च करके उस पे रिसर्च टूल्स को यूज करके अपनी जो वेबसाइट्स हैं गूगल पे टॉप पे उनकी वेबसाइट है जो पेड होते हैं, जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, सब बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती है। तो लिटरेचर रिव्यू आप गूगल से करना मुश्किल हो गया, ऐसा भी नहीं गूगल पे आप करेंगे वो आप सब चीजें अवेलेबल है, तो गूगल पे हर चीज अवेलेबल नहीं है। तो उसका हल क्या है? उसका हल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स का इस्तेमाल है, डेटाबेसेस का इस्तेमाल है जो अवेलेबल है लेकिन हम जानते नहीं कि हमें उसको यूज कैसे करना है। एक तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज पैसे खर्च करने से बहुत प्रॉब्लम है, फंडिंग नहीं है ना, खर्च करना चाहते हैं, रिसर्च सब करना चाहते हैं, मतलब हमारे यहाँ हम फोकस तो करते हैं रिसर्च पे लेकिन प्रैक्टिकली हम रिसर्च के लिए रुपया खर्च नहीं करते। यानी कि इवन तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज इक्का दुक्का होगी जहाँ पर रिसर्च पे फोकस किया जाता है। इवन मैं बताऊं कि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई 14 साल हो गए, 14 इयर्स हो गए, डॉक्टर आरिफ को भी 8-9 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें जो 14 इयर्स से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। 14 इयर्स में हायर एजुकेशन कमीशन कहता है जनाब आपको जो प्रमोशन होगी तो रिसर्च आर्टिकल एक्सपीरियंस तो है लेकिन रिसर्च आर्टिकल बहुत जरूरत है। जब आप प्रैक्टिकली आएंगे तो टीचर्स कहते हैं आपने जनाब वीक में 15 क्रेडिट आवर्स 18 क्रेडिट आवर्स आपने पढ़ाए, अब इतने क्रेडिट आवर्स जब पढ़ाएंगे तो रिसर्च कब करेंगे? मैं दोस्त मुझे अक्सर पूछता है, वो जब आता है पाकिस्तान मुझे कहता है यार इतना वर्कलोड है आपके ऊपर, रिसर्च कब करते हैं आप लोग? तो मैं दिल्ली में कह रहा होता बस कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, फैमिली भी आपके साथ, सोसाइटी भी, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, हम फिर भी बड़े परेशान होते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, किसी का रिप्लाई नहीं करते हैं रिसर्च करने के लिए, वीकेंड पे से वीकेंड बनाते हैं, बाकी 5 दिन का अपना पूरा काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल सोसाइटी से ताल्लुक को भी कम कर, तो आप तो इतना क्लासेस भी ले रही है, क्लास 10 में जिसको टीचर को पढ़ाना है, ऑफ कोर्स आपने जो जिसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आपको टेंशन है, तो ये सारी चीजें मौजूद हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के साथ साथ हमें बाहर आगे भी बढ़ना है। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं, आज की वर्कशॉप को भी ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपने स्टूडेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो थीसिस राइटिंग का पार्ट है। जितना कोर्स वर्क हम स्टूडेंट आपने बहुत स्टूडेंट कर लिया है, कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ सेकंड में है, कोई न्यू है, लेकिन बाहर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थीसिस राइटिंग है, जो कि हमारे यहाँ हमारे जितनी भी थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी की एक्चुअली उसके प्रैक्टिकल्स मिस हैं, हमें अपने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए, जो कि जिसको हम आईआर के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं, जो चीज हमारे यहाँ जो उसका रिलेट नहीं है वो है सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। आईआर के अंदर प्रैक्टिकल्स की स्टडीज की है, आप इसके फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, आप कॉन्फ्लिक्ट को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को, इंटरनेशनली कोई क्राइसिस आ गया है, उस क्राइसिस को जो है वो कैसे सॉर्ट आउट करना है। डिप्लोमेसी तो नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, डिप्लोमेसी जो है वो, लेकिन डिप्लोमेसी के को जो है उस इश्यूज में जो आ जाते हैं डिप्लोमेटिक, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये हम सिमुलेशन एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन ये चीजें मिस हैं। तो इसी बहुत सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी हमें चीजों को जो है वो आगे लेके बढ़ना, तो बाद हमें वेल कंडक्टेड जो है वो जो क्वालिटी वाला लिटरेचर रिव्यू तो हम बहाल कर सकते हैं, टेबल रिसर्च जिसको कह सकते हैं, और उसके अच्छा अगर हम ट्रेडिशनल लिटरेचर की बात करें तो वो नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं जनाब आपने लाइब्रेरी जाना है, आपने सर्च करनी है बुक्स, आपने रेलेवेंट डेटा जमा करना है, वहां से आपको बताऊं मैं आपको मतलब हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो उस्ताद जिन्होंने पढ़ाया, हमने उनसे पूछते रहते हैं कि जनाब हाउ टू राइट व्हेन ही वाज डूइंग पीएचडी या ही वाज राइटिंग द पीएचडी डिसर्टेशन, what kind of problem that time were you faced? That time he said कि भाई हम तो लाइब्रेरी जाते थे, मैं तो लाइब्रेरी और बुक्स पूरा दिन बुक्स देखते रहते थे, बुक्स मिल गई तो तस्वीर पिक्चर लेनी है, थोड़ा सा पिक्चर मोबाइल ही वाले थे, फोटोकॉपी करनी, फोटोकॉपी कितनी महंगी होती है, फोटोकॉपी भी नहीं होती थी तो लिखना और हाथ से। आप मुझे बताएं राइटर सोचिए उस बारे में कि लोग आज से 15-20 साल पहले इसी पाकिस्तान 10 साल पहले लगा लें हम लाइब्रेरी में जाके लोग फोटोकॉपी तो बाद में होना शुरू हुई, लिखते थे हाथ से, किताबों से लेके लिख लिया, ये काम ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इसको लिख लिया जाए, रेफरेंस नीचे लिख लिया जाए, इतना बहुत सारा लिख के फिर जाके डेटा कलेक्शन करते थे, उसके ऊपर उस लिखा अच्छा ये लिख लिया, फिर उसको कंपोज तो बहुत बाद में करते थे हम लोग, पहले उसको करके अब इतना हैंड राइटिंग काम होता था हमारा, और फिर उसके बाद मैक्सिमम तरक्की की हमने फोटोकॉपी आ गई, हमारे पास प्रिंट आउट आ गए और पिक्चर्स आ गई, लेकिन वही एक जो है ट्रेडिशनल व्यूज था हमारा कि बस डेटा ऐसा जमा कर लिया जाए, बुक आर्टिकल बहुत सारे जमा कर ली जाए,
या फिर क्या हमारे पास क्या डेवलपमेंट हुई जिसमें दुनिया बहुत आगे चली गई और हमारे पास ये हुई कि हमारे पास लैपटॉप आ गया और लैपटॉप में इंटरनेट आ गया, हमने बहुत सारे आर्टिकल जमा कर लिए और फोल्डर में जमा कर लिए सारे को 200 300। जब मैं अपनी थीसिस कर रहा था तो मुझे याद है दुनिया में कोई आर्टिकल नहीं हुआ जो मैंने नहीं छोड़ा, जो मैंने देखा नहीं हुआ। मतलब मैं अमेरिकन इंटरेस्ट सेंट्रेशन में काम कर रहा था, मेरे पास को 1000 साइटेशन में डिजिटेशन में। तो मैं किसी से बात करता हूँ 1000 कैसे, तो उसके मतलब दुनिया भर में जितना भी काम हुआ था सारा मैंने देखा जरूर था, चाहे उसको इस्तेमाल किया ना किया। तो ये एक वो था ट्रेडिशनल व्यू था, लेकिन उस पर काम कितनी मेहनत कितनी लगी, मैंने पूरा डेटा जमा किया, दुनिया में जहां जहां थिंक टैंक्स हैं रेलेवेंट उनसे रिपोर्ट्स जमा की गई। अब इस पर बहुत टाइम लगा, इतना सारा टाइम लगा कि हमारा लेकिन आज वो काम क्लिक्स में हो सकता है। वो आज काम जो है वो जहां इयर्स में लगते हैं मंथ में हो सकता है, मंथ का काम वीक्स में और डेज में और आवर्स में आप जो है काम बहुत आसान हो गया। लेकिन उसके लिए हमें क्वालिटी वर्क कुछ जो वो लाने की जरूरत है कि अब हम अपनी क्वांटिटेटिव या अपनी प्राइमरी सोर्सेज को उसमें ऐड करके अपने रिव्यू लिटरेचर को या अपने डिजिटेशन को कैसे सिग्निफिकेंट बना सकते हैं। फिर एआई जो एप्स हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको मैं। एआई एप्स का मतलब जो हम यूज करेंगे, जो आपको मैं सिखाऊंगा, इस सीड्स एप्लीकेशन में दिया होता है, ये कोई चीटिंग नहीं है, कोई प्लेजरिज्म नहीं है। जस्ट जो काम आप पर ट्रेडिशनल वे से करते थे वो एक सिस्टमैटिकली आप करेंगे। इसके लिए बहुत सारे डेटाबेसेस भी मौजूद हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस के मतलब ये है कि वो जैसे कुछ डेटाबेसेस हैं, कुछ अवेलेबल हैं, ज्यादातर अवेलेबल नहीं है, पैसों के मिलते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी खरीदती नहीं है दुनिया में, तो वो लाइब्रेरी में ऑनलाइन एक्सेस होते हैं कि अगर आपका यूनिवर्सिटी अकाउंट है तो आपको पता नहीं कितने डेटाबेस में एक्सेस है, वहां से आप मिलियन ऑफ आर्टिकल्स जो है वो उनका एक्सेस मिल जाता है, आप इजीली उन आर्टिकल को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये यार से क्या क्या काम है, ये सब काम जो है ये है जो हम आपको सिखाएंगे कि आप सपोज करें फॉर एग्जांपल, अब दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा उसका इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आपको मैं। आपको एक आर्टिकल गूगल स्कॉलर में जाएं, आप कहें कि ये सपोज करें कि ये आर्टिकल्स मेरे कुछ क्वेश्चन के करीब है, क्वेश्चन ए है आपका, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे हाइपोथेसिस है। आप हाइपोथेसिस को आपके माइंड में है कि हाइपोथेसिस मेरा ये है, जिसको बाद में आप बड़ी बात है सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप कहेंगे ये 2 3 4 आर्टिकल है, ये मेरे कुछ एरिया के काफी कांसेप्ट के करीब है। अगर वो आर्टिकल आप एक एप्लीकेशन में डालें, वो एप्लीकेशन आपको विजुअलाइज कर दे कि जनाब ये आर्टिकल ने इस बंदे ने इस 20 लोगों को साइट किया है, उन 20 लोगों ने उसको साइट किया, पूरा मैप आपके सामने आ जाए। काम आप गूगल स्कॉलर में इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे। आप भी मैं गूगल स्कॉलर करके दिखाऊंगा, गूगल हमें सिर्फ टॉप बताएगा आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल पीछे कर देगा। गूगल का अपना, गूगल स्कॉलर का भी अपना एक फंक्शन है, उसको भी समझने की जरूरत है। गूगल स्कॉलर से ये हेल्प कर सकते हैं कि आपको किसी एक आर्टिकल वहां से ले लिया, टाइटल ले लिया, आपने सीड एप्लीकेशन में डाला, वहां से विजुअलाइज कर दिया आपने, वो आपको पूरा बता देगा। वहां से आपने कुछ नहीं करना, क्लिक करना है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा आपने काम किया, आपने उसको फोल्डर में डाल दिया, कुछ नहीं करना। कहीं आपके लैपटॉप में जो हम पहले इंडिविजुअल काम करके आर्टिकल को डाउनलोड करते थे, वो फोल्डर बनाया करते थे, फिर उनको आर्टिकल्स को कौन सा आर्टिकल कहां सेव किया, ये बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। सीड एप्लीकेशन आपके लिए हेल्पफुल है काम डेटा कलेक्शन के हवाले से, आपके आर्टिकल को कलेक्ट करने के हवाले से, कि आप सारे आर्टिकल, एक आर्टिकल डाला आपने, कहा कि ये मेरे कॉन्सेप्ट के करीब है, आपको विजुअलाइज करेगा, आपको आप देखेंगे कि वो 20-30 फादर मैं एक आर्टिकल लिखता हूं तो 20-25-30 रेफरेंस यूज करूंगा, वो आपको विजुअलाइज कर देगा कि मैंने इस 30 लोग रेफरेंस यूज किया है, उन 30 ने अगले किसको यूज किया है, तो पूरा वो बन जाएगा। उसके अंदर भी आपको मैप नजर आ जाएगा कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके आर्टिकल को साइटेशन ज्यादा हुई हुई है, मजीद न्यू कितने है, उसमें पूरा विजुअलाइज नजर आ जाएगा। तो उसमें आप क्लिक करते रहें, डेट उसमें आर्टिकल सिलेक्ट करते रहें, और वो आर्टिकल जो है वो इस तरह आपका जो काम है जो गूगल पे आप करते हैं वो काफी हद तक आसान हो जाता है। यानी ये समझिए कि आपके पास एक आर्टिकल, आपने रिव्यू लिटरेचर लिखना है, रिसर्च आर्टिकल लिखिए, अगर आपको 100-200 आर्टिकल आपके बहुत आवर्स में जमा हो जाए आपके, और 200 आर्टिकल्स अगर आपके वेरिएबल्स या की टर्म्स के, तो आपको कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। और फिर आपको ज़ोटैरो की हेल्प मिल जाए। ज़ोटैरो का जो काम है वो हम दिखाएंगे, हम दाशाब में हेल्प करेंगे उसमें। अगर जिस तरह हम एमबीए करते थे, हम आर्टिकल पढ़ते हैं, नॉर्मली भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं यार ये पैराग्राफ, ये लाइंस, 2 लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वहां हमारे एमएस वर्ड में पेस्ट करो, उसको लिंक दे दो, उसका आर्टिकल कर, ये करते हैं मैं ऐसी चीजें। ज़ोटैरो बिल्कुल आपको समझ ले कि एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये सारे काम आप करते रहे, खुद ही आपको सेव करता रहेगा।
MS वर्ड में जाएं, सारा जो काम आपका सेलेक्ट किया उसको इंडिविजुअली सेलेक्ट करते रहे, जितने नोट्स है वहां इंटेक्स साइटेशन के साथ आ जाते हैं। तो जितनी इंटेक्स साइटेशन आप यूज करेंगे, जस्ट क्लिक करें, जिस टाइप में भी आपने वो जो साइटेशन आपने यूज की है अपने पेपर में, जस्ट आपने कहना है कि मुझे एपीएस स्टाइल या जो भी एमएलए जो भी स्टाइल चाहिए आपको, इवन आप स्टाइल बना भी सकते हैं उसके अंदर। क्लिक किया, जितनी साइटेशन आपने यूज की है, क्लिक पे आपका जो है ना वो आप नीचे आ जाएगा रेफरेंसेस में। कहीं आपने आर्टिकल भेजा, अक्सर हम हर रिसर्च जर्नल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट से मतलब ये है, कोई कहता है मुझे एमएलए चाहिए, कोई कहता है मुझे एपीए चाहिए। आप एक जर्नल में भेज दिया, मैं गलती से आपने एपीए स्टाइल भेज दिया, उसने कहा आपकी मैं कर दिया भाई ये तो आपने एपीए भेजा, मुझे एमएलए चाहिए। अब आप परेशान हो जाएंगे। तो ज़ोटैरो इस मामले में हेल्प करेगा। वो कोई मसला नहीं, ज़ोटैरो में सेफ चीजें आपकी, आपने जस्ट एक क्लिक उससे सेटिंग में जाना है, प्रेफरेंसेस में बताऊंगा कैसे करना है, आपने जस्ट उसको करने के ना एपीए या मुझे एमएलए चाहिए, वो सारे रेफरेंसेस जो है आपको वो एमएलए में कन्वर्ट कर देगा और आपका काम जो है वो मिनट्स में आपका काम जो है वो क्विकली हो जाएगा। तो ये काम जो है ये हम एप्स के थ्रू डेटा कलेक्शन करना, यानी कि जो आपकी आर्टिकल्स हैं वो उसकी कलेक्शंस और उसकी लिंक्स आपको पता चल जाएगी, इसके रूट्स हर आर्टिकल के कहां हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, रूट्स को ढूंढना। आमतौर पे गूगल स्कॉलर में क्या होता है, हम आर्टिकल में देखते हैं उसके टाइटल्स को देखते हैं, ये टाइटल्स हमारे आर्टिकल से मिलते जुलते हैं, या इंडिविजुअली उनको राइट क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं और देन जो है वो क्या कहते हैं उसको वो आर्टिकल खोले, उससे अपडेट पढ़े, फिर जो है वो हम उसको डाउनलोड करते हैं या हम उसको अपने कहीं सेव कर लेते हैं। और बहुत सारे इस तरह इंडिविजुअली हम गूगल स्कॉलर में जाकर उन चीजों को सिलेक्ट करके वो चीजें कर पाते हैं। लेकिन जो एप्स है हमारी, ये एप्स हमें इस मामले से, इस प्रॉब्लम से हमें जो है वो समझने के हेल्प करती हैं और ये हमारे लिए रिव्यू लिटरेचर के लिए बहुत हेल्पफुल और हमें लिटरेचर भी हमारा बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं जो आपको जो हमारा मेरे लेक्चर का जो फोकस था, जो मेन पर्पस था वो यही था कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते रहते हैं, हम अपनी थ्योरी का इस्तेमाल करते रहते हैं, ट्रेडिशनल व्यू से रिव्यू लिटरेचर करते रहते हैं, लेकिन हाउ लिटरेचर व्यू, हाउ टू कलेक्ट द डेटा, स्पेशली फाइल्स, रिसर्च पेपर्स, और उसको वो सारा काम आपका जो आप जो है मैनुअली करेंगे, वो काम आपका ऑटोमेटिकली जो है वो डेटाबेसेस से या आपके सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से हो जाए और आपका टाइम सेव हो जाए और उसके अंदर आपकी क्वालिटी अपने हिसाब से लेके आ सकते हैं। सीड एप्लीकेशंस, जो इसका मैंने आपको बताया था कि सीड एप्लीकेशन जो है वो ये इसकी पिक्चर ले सकते हैं, ये जिसके आगे फ्री लिखा हुआ है ये फ्री एप्स हैं। बाकी जो एप्स हैं वो क्या करती हैं, जो वो किसी लिमिट तक तो फ्री हैं लेकिन उसके बाद वो पैसे मांगती है। मतलब आप आपने ऐसे लाइट सा कुछ काम किया है तो ओके, लेकिन आपको ज्यादा काम करना है तो आपको जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। पेमेंट कुछ ऐप्स में बहुत नॉमिनल पेमेंट है, कहीं पर कुछ डॉलर फीस है मंथली। मैं समझता हूँ अगर आपको कोई ऐप अगर आपकी हेल्पफुल हो तो यू शुड बाय, और आपको जो है वो ऐप ले लेनी चाहिए। सॉरी, तो आप उन ऐप्स को बाय कर सकते हैं और वो ऐप्स जो है वो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो अगर आपको हेल्पफुल हो सकती है आपके डेटा कलेक्शन के लिए आप, लेकिन पहले आप इस्तेमाल करें उसको मैनुअली या फ्री जो वर्जन है उसका इस्तेमाल करें, फिर आप डिसाइड करें कि आपकी कौन सी ऐप मोस्टली जो है आपके लिए करीब तर है या आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छा, फिर इस ऐप्स के अंदर भी ना वो है मेडिकल वालों के लिए भी उसमें अलग-अलग हैं, मतलब इसमें आगे फील्ड्स भी हैं बहुत सारी। मैं उसमें ज्यादा ये 6-7 ऐप्स हैं, 3 उसमें जो रिसर्च रैबिट है, इनसाइटफुल है, एलिसिट है, ये बड़ी मेजर ऐप्स हैं। ये सीड एप्लीकेशन जो है हमें विजुलाइज, मैंने बताया मल्टीपल पेपर्स के बारे में विजुलाइज जब हम करेंगे उसको नहीं बताएंगे हमें कि जनाब ये ऐप्स जो है वो कैसे जो है पेपर कनेक्टेड है आपस में। पेपर जो है वो उनके कनेक्शन में पता लगेंगे। और मैं बताऊं, मैं एक चीज समझने की है, एक बात याद रखिए, हर फील्ड में इंटरनेशनल रिलेशंस हो या कोई और फील्ड हो, हर फील्ड में कुछ एक्सपर्ट्स टॉप होते हैं जो यानी मैं अपनी सैंक्रेशन मैं उस एरिया में काम करता हूं तो मुझे पता है कि ये 6-8 लोग हैं जो मेजर एक्सपर्ट्स हैं और मेजर प्रोफेसर्स हैं, उनके पेपर्स, उनकी बुक्स सब वो करते हैं। हम ना ऐसे रिसर्चर्स को, प्रोफेसर्स को ढूंढने अपनी फील्ड के जो टॉप हैं, वो सब साइट करते हैं।
इसको फाइंड आउट करना ये है, इस तरह की एप्स भी हेल्प कर सकती हैं जनाब कि वो जरूर कनेक्ट करेंगी ऐसे प्रोफेसर्स को और ये शो कर रही होगी कितने लोगों ने एक पेपर को कितनी दफा साइट किया है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको अंदाजा होगा। तो कोशिश करें उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने बेसिक काम किया है, बजाय कि जिसने खुद उसको साइट किया आप उसको आप साइट करें। आप प्राइमरी जो पर्सन है आप उस तक पहुंचने की कोशिश करें। तो ये जो विजुअलाइज जो एप्स है ये जो करेगी ये बताएगी जनाब कि ऐप पेपर कनेक्टेड कैसे हैं। फिर इसके अलावा कैसे इंटरेक्टिव ग्राफ भी बना के आपको इसी से लगेगा ग्राफ्स बनेंगे, पेपर के कनेक्शन शो होंगे, कैसे पेपर आपस में किसने किसको साइड किया है, और आगे फिर मजीद आप अपने हिसाब से ग्राफ डेवलप भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फिर उसी एप्स के अंदर आप जो है अपने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई पेपर पसंद आ गया, पेपर आपको जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आपके बिल्कुल एरिया के करीब है, आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। अब एब्स्ट्रैक्ट आमतौर पे 250 वर्ड्स का 300 वर्ड से ज्यादा किसी का एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल वो जो टाइम लगेगा आपका वही टाइम लगेगा जो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने में है। और नॉर्मली आप टाइटल से और एब्स्ट्रैक्ट की लाइन से आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस पेपर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू और नॉट। तो ये डिपेंड ऑन यू कि आप एब्स्ट्रैक्ट की स्पीड से पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप उनको उसी एप्स के अंदर जो है फोल्डर में आप ऐड करते रहे। तो आपको इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उसी ऐप को अंदर ही सारी जितनी चीजें 100 पेपर हैं 200 पेपर्स हैं जितने 100 पेपर हैं आप ऐड करते रहे और उसको भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये पेपर आपस में कैसे कनेक्टेड है। फिर उसमें से कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो ज़ोटैरो से इंटीग्रेट है। हमें जस्ट वहां फोल्डर में पेपर सॉर्ट आउट करना होगा। तो पेपर उसमें जो है वो हमें फोल्डर से डायरेक्टली हमारे पास ज़ोटैरो में आ जाएगा। और अगर बताऊंगा कैसे, तो हमें वो भी इंपोर्ट की या इस तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट वहां सेव करना है, ऑटोमेटिकली ज़ोटैरो में ऐड हो जाएगा। और जो ज़ोटैरो अगला काम है बताऊंगा आपको मैं। एक इसमें एप्लीकेशन है एलईसी। ये आपके क्वेश्चन को जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। आपको क्वेश्चन उसमें लिखें या वेरिएबल लिखें, आपने कोई भी अपने पेपर की कोई 2-3 चीजें आप उसमें लिखें तो ऑप्शन भी देता है। कुछ टॉप पेपर भी देता है, समरी भी बना के देगा आपको कि टॉप 4-5% आपके वेरिएबल्स या क्वेश्चंस के बारे में क्या कह रहे हैं, वो बहुत सारे पेपर देगा। तो उसमें और भी ऑप्शन आते हैं कि जनाब आपने एब्स्ट्रैक्ट देखने हैं, आपने फाइंडिंग्स देखनी है, क्या उसमें है उसके ऑप्शंस आते हैं, वो सारे आपको आगे बात नजर आ जाएंगी। ज़ोटैरो मैंने के बारे में थोड़ा मतलब बताया था। ज़ोटैरो कैसा टूल है बिल्कुल फ्री है। सबसे अच्छी बात ये है कि ज़ोटैरो जो दो चीजें हैं, एक मेंडले है और एक ज़ोटैरो है। मैंने ज़ोटैरो को ज्यादा यूज किया, मैंने लोग जस्ट थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन मुझे ज़ोटैरो कहते हैं कि ज्यादा आसान है, सादा, एक सिंपल भी है और आसान भी है और बहुत सारी ऐप से कनेक्टेड भी है, इसलिए इसके ऐसा है। और फ्री भी बिल्कुल फ्री है, कोई इसके कॉस्ट नहीं है। जस्ट आपको जो है वो यूज करने में आपको बताऊंगा कैसे है। और ये बेसिकली शुरू में सोर्स साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था। ये बाद में आके जो है इसके नोट्स बनाना और चीजें जो है बाद में ऐड होती रही हैं। जैसे जैसे उसमें एआई में तब्दीली आती गई, बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं, रिसर्च मटेरियल, फॉर्मेट साइटेशन, नोट्स और लोगों के साथ अपनी रिसर्च, अपनी जो डेटा है, अपनी फोल्डर है वो आप शेयर भी कर सकते हैं। आप अपनी सारी रिसर्च जो है, सारी साइटेशन जो है वो ज़ोटैरो के अंदर उसके अंदर आप सेव रख सकते हैं। कोई आर्टिकल आपने लिखा है उसका एक फोल्डर बना लिया, उस आर्टिकल से आप उसमें 100 आर्टिकल्स हैं, आपने साइट किए हैं, 50 आर्टिकल साइट किए हैं, वो ऑटोमेटिक शेयर करते रहे, आपको इसमें सीक्वेंस बन जाएगी, एक बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी आपकी, जिसमें आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के फायदा है 200 या 500 या 1000 आर्टिकल हैं। तो आपको कोई नया आर्टिकल लिखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एमएस वर्ड में क्लिक करना है बटन, ऑटोमेटिकली इंडेक्स साइटेशन भी आ जाएगी, ऑटो जनरेट जो है आपके एंड नोट भी आपके रेफरेंसेस वो भी आ जाएगी। आपका टाइम बहुत टाइम आपका सेव हो जाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी सेव होगा और आपको जो एक मैनुअली जो हमें जो है काम करना पड़ता था साइटेशंस के हवाले से, वो भी उससे भी हमारी जो है ऑलमोस्ट जो है वो जान छूट जाएगी। तो ये आप इसको इन ऐप्स को यूज कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको ज़ोटैरो पे जो है वो थोड़ा सा ज़ोटैरो पे मैं आप ये ज़ोटैरो को करना क्या है पहले आपको बताया था। देखिए ज़ोटैरो बिल्कुल एक फ्री टूल है, कोई इसमें इसके पैसे नहीं है। जस्ट आपने ज़ोटैरो को जो है लिखा, हमने लिखा ज़ोटैरो को जनाब ज़ोटैरो। आप देखें
ये दशा आप कह रहे थे कि जस्ट आपने वो लिखे ज़ोटैरो फॉर डाउनलोड तीन चीजें ओके आप ज़ोटैरो करेंगे डाउनलोड ओके लिखा आपने देखिए ये टॉप पे आपकी पहले ही ऐप आ गई सिंपल आपने डाउनलोड किया आपकी मैकबुक है आपकी जो भी आपका जो है विंडो है सिंपल डाउनलोड कर लिया फॉर डेस्कटॉप वहां आपने रन किया आपके डेस्कटॉप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अभी मैं खोल के दिखाऊंगा नंबर 1 आपने इसको फॉर डेस्कटॉप डाउनलोड कर लिया ज़ोटैरो नंबर 2 आपने ज़ोटैरो कनेक्ट कर अगर आपके पास आप क्रोम यूज करते हैं या कोई और जो है ऐप यूज करते हैं ब्राउजिंग के लिए आपने उसके कनेक्टर अवेलेबल है ज़ोटैरो लिखना ज़ोटैरो कनेक्टर या ज़ोटैरो एक्सटेंशन फॉर गूगल आपने लिखा गूगल लिखे या क्रोम लिखते हैं हां सॉरी क्रोम करें ज़ोटैरो कनेक्टर पे आ जाए आप ये ऐसे खुल जाए मेरे पास ऑलरेडी ऐड है ये लिखा है रिमूव फ्रॉम क्रोम यहां पर वो आ जाएगा ऐड करने का प्लगइन आपने जस्ट प्लगइन करना है और वो ऑटोमेटिकली आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा ऊपर मैंडलेट जो एम लिखा है उसके बराबर में ज़ोटैरो है लेफ्ट में हां ये वाला ये ज़ोटैरो है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है मैंने फर्स्ट में क्या किया ज़ोटैरो डाउनलोड कर लिया फॉर डेस्कटॉप सेकंडली ज़ोटैरो को कनेक्ट कर दिया ज़ोटैरो कनेक्टर इन गूगल क्रोम थर्ड एमएस वर्ड में इसको जस्ट दिखा दे हमारे पास ऑलरेडी है ज़ोटैरो को तीसरा जो काम करना है वो एक एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है प्लगइन का ज़ोटैरो प्लगइन हो जाता है एमएस वर्ड के अंदर और ये तीन चीजें आपने सबसे पहले जो करनी है आपने अपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को स्ट्रेंथन करने के लिए तो वहां आप यहां से जब प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा उसको आपने रन करना है वो ऑटोमेटिकली जो है एमएस वर्ड में कनेक्ट हो जाएगा अब क्या होगा ज़ोटैरो डेस्कटॉप जिससे आपने हम मेन काम करेंगे नंबर 2 ज़ोटैरो कनेक्टर जो गूगल क्रोम में हमारे पास कनेक्ट है ये एक किस्म का जादू काम करेंगे हमारे लिए और हमें जो अक्सर हम काम तो से कॉपी किया लिंक पेस्ट किया होगा एमएस वर्ड में इससे भाई जान चुके हमने एक आर्टिकल पढ़ा उस आर्टिकल के नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमने वो फाइल पीडीएफ पे नहीं है वो फाइल एमएस कोई रिपोर्ट है रिसर्च रिपोर्ट है थिंक टैंक की डाउनलोड नहीं होनी पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है आपने चाह रहे हैं कि पैराग्राफ मेरे पास आ जाए नॉर्मली हम करते हैं कॉपी मारते हैं और पेस्ट मारते हैं एमएस वर्ड में और उसको फुटनोट में जिस तरीके से भी आप उसकी साइटेशन बनाते हैं आप कर लेते हैं आपने कुछ नहीं करना आपने उसको जस्ट खोलना है और वहीं पर उसको ऐड कर देना है और हम आपको दिखाएंगे ज़ोटैरो खोलें ओके एक एग्जांपल में जाए एग्जांपल ये अच्छा पहले एक फंक्शन देखें जरा ऊपर जो आप देखें ये ज़ोटैरो है पूरा सिंपल होम खोल लेना देखिए ये हाँ बस ठीक है ये ज़ोटैरो है आप देखिए जरा इसको सिंपली देखें ऊपर फाइल एडिट व्यू टूल्स है ये सारी चीजें जो है मैं कुछ आपको मेन चीजें सिखाऊंगा आपको मैं बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ चीजें आ जाएंगी आपको फाइल में जाएंगे वहां आपने ऊपर नीचे माय लाइब्रेरी लिखा हुआ है नीचे देखिए मैंने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान पे काम किया था तो मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी अफगानिस्तान में रिसर्च पेपर थे सारे के सारे मैंने रिसर्च पेपर इसमें ऐड कर लिए और जब मैंने बुक चैप्टर लिखा तो उसमें मैंने सिंपली यहीं से मैंने सारे नोट्स मैंने यहीं से बनाए बुक चैप्टर के जितने नोट्स थे मैंने वो सारे मैंने जब पूरे आर्टिकल डाउनलोड करके सारे मैंने मेरा जब रिव्यू लिटरेचर किया सारे नोट्स मैंने यहाँ से लिए और फिर मैंने उसको मुझे वहां मैंने गूगल में चला गया गूगल में मैंने जस्ट क्लिक किया उतने नोट्स मैंने यहाँ बनाए मैंने सारे वहां मैंने इंपोर्ट कर लिए इंडेक्स साइटेशन और इवन वो मैंने एंड नोट भी वहीं से कर दिए अब हम आपके सामने इस तरह की कोई फोल्डर आप बना सकते हैं एग्जांपल आपने कोई ए बी सी जो भी आपने काम करना है आपने फोल्डर बनाया नॉर्मली होता है कि जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं हमारा एमफिल का थीसिस है पीएचडी का थीसिस है हम उसके नाम पे आप फोल्डर बना सकते हैं क्रिएट करके फोल्डर आप फोल्डर क्रिएट करें मतलब ये होता है कि जनाब ये काम जो है इस थीसिस या रिसर्च पेपर से रिलेटेड है हमने एग्जांपल में आगे दशा अच्छा हमने ऐसे बहुत सारे फोल्डर आप फाइल में जाएंगे ना तो बहुत सारे फोल्डर बन जाएंगे उसका इशू नहीं है अब फोल्डर में गए मैंने फोल्डर बना लिया एग्जांपल वाला अब दशा आप जाएं गूगल में जाएं गूगल में जाएं यहां से आप कोई भी रिसर्च आर्टिकल गूगल स्कॉलर निकालें पहले गूगल स्कॉलर खोलें आप
बस ठीक है, ये गूगल स्कॉलर खुल गया। नॉर्मली रिसर्च पेपर हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब मैंने कुछ भी लिख लिया, कोई भी वेरिएबल लिख लिया, ये किंगडम लिख लिया, अफगानिस्तान लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, सीपैक लिख लिया, सही है। अब देखिए ये पेपर आ गया। अब हम चाहेंगे ये पेपर मेरा ज़ोटैरो में सेव हो जाए। सबसे पहले जो काम करना है, अपने ज़ोटैरो के जो डेस्कटॉप है, हमारे पेपर है, रिसर्च का पेपर है, सारे रिसर्च पेपर हमारे ज़ोटैरो के डेस्कटॉप पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने ये काम हो सकता है कि मैं राइट क्लिक करूं, इसको आर्टिकल खोलूं, नंबर 1, मैं ये नहीं करूंगा। आप ये खोलें, दशा साइट खोलें, साइट खोलें, यस मैंने साइट खोला। देखिए इसके नीचे बाइट टेक्स्ट आ गया, एंड नोट आ गया, रेफ मैन आ गया, रेफ वर्क्स आ गया। मैंने रेफ मैन पे क्लिक किया, फिर ऊपर जाए एग्जांपल में देखिए, वो क्लिक करें उसको, बिल्कुल ठीक एग्जांपल में जाना था मैंने, बिल्कुल सही है, बराबर क्लिक करें आप, बिल्कुल एग्जांपल में डन कर दें, उसको डन कर लिया, ठीक है। अब जाए उस पे ज़ोटैरो डेस्कटॉप पे जाए आप, उसको वहां से क्लिक करें, उसको यस क्लिक करें, डबल क्लिक करें, क्लिक नहीं होगा पूरा इसमें फाइल बोली, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ अगर वो आर्टिकल में पीडीएफ है, आर्टिकल में पीडीएफ है तो वो फौरन पीडीएफ, अक्सर आपको पता है कुछ पेपर कैसे मांगते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, कुछ नॉन एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन हम फ्री वर्जन यूज कर रहे होते हैं, तो मैं तो वो तो बहुत सारे अक्सर आर्टिकल्स जो है वो फ्री होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल या उसके नेट पे ढूंढने के तरीके का होते हैं, उसके फ्री वर्जन भी कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं रिसर्च गेट पे। नॉर्मली मेरे बहुत सारे पेपर फॉर एग्जांपल रिसर्च आर्टिकल ऐसे हैं, मैंने इसलिए छप किए हैं कि वो नॉर्मली आप ढूंढेंगे तो आपको पैसे देके पे करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली स्कॉलर क्या करते हैं, वो अपने आर्टिकल की पीडीएफ फाइल रिसर्च गेट में या academy.edu में डाल देते हैं, नॉर्मली लोग करते हैं। तो आप रिसर्च गेट में जाकर वो ऐसी आर्टिकल की टाइटल आप सर्च करें, तो मेरा अपना ख्याल है कि काफी हद तक आपको बहुत सारे पेपर जो पैसे मांग रहे थे, जो कि मतलब मेरा चैप्टर छपेगा उसमें भी बुक वालों ने कहा कि जनाब हम आपको फ्री एक्सेस लोगों के लिए देंगे, जो कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, हम छापने के पैसे नहीं ले रहे, लेकिन जो जिसको चाहिए होगा हम उससे पैसे लेंगे। वो पैसे कैसे पूरे करते हैं, वो लाइब्रेरियों से सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उससे उनकी अच्छी से इनकम हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो सारी बुक उठाऊंगा, पीडीएफ भी अपने रिसर्च गेट पे डाल दूंगा, किसी को भी चाहिए तो रिसर्च गेट से मुझे पिक कर लेगा, वहां से जो है उसको ऐड कर लेगा। आप एक काम करें, रिसर्च गेट खोल लें या गूगल स्कॉलर में जाए और कोई भी आर्टिकल जो है वो डाउनलोड कर लें, उसमें ऐड कर लें। one thing which I would like to add here कि आप देखिए यहाँ पे एक ऊपर एक अटैचमेंट का ऑप्शन दिख रहा है सबको, जहाँ पे मेरा ऐड हुआ है, उसके नीचे जहाँ पे आपको पीडीएफ और डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब इन ऑप्शंस में फाइल अटैच है। तो आप इसको खोल के यहीं से ही सीधे अपना पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। और जहां पे नहीं है तो उसका मतलब जो सर ने बताया कि वो जो लिंक है वो फील्ड है, उसमें आपको साइटेशन जरूर मिल रही है, लेकिन आपको जो पेपर का एक्सेस है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये सिर्फ इस चीज की। अच्छा एग्जांपल में जाए, वो आप आर्टिकल ऐड करके दिखाएंगे, एग्जांपल में जाए पीडीएफ आर्टिकल कोई भी वहां जाए, मैं मैनुअली नहीं उस काम करे, वो रिसर्च गेट में जाए, वरना वो जो वो आईडी होती है ना, ओसिड आईडी या वो वाली, इसको खोले, गूगल स्कॉलर खोले, गूगल स्कॉलर पे जाए, इसका पीडीएफ खोल लेते हैं, इसका राइट क्लिक करें, पीडीएफ खुलेगा, इसका इसे क्लिक करें, एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी हमने ज़ोटैरो खोला, वो कह रहा है कि ये आर्टिकल, ज़ोटैरो कह रहा है कि ये आर्टिकल के पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये देखें इस पे ये आर्टिकल खुल गया। अब मैंने इसको क्या किया, आर्टिकल यहाँ मौजूद है, एक ऑप्शन ये मौजूद है कि मैं इस आर्टिकल को डाउनलोड करूं, डाउनलोड करके जहां मैंने फाइल ज़ोटैरो में डाली है वहां मैनुअली जो है अपलोड कर दूं। नंबर 2 ऑप्शन में मौजूद है, वहीं मैंने गूगल का जो कनेक्टर है वहां गया, ये लगा, इसको सही कर दे,
ओके, ये ज़ोथेरो कनेक्टर है, फाइल खुली है, ज़ोथेरो कनेक्टर में क्लिक करें, यस क्लिक करें, एग्जांपल आ गई, ठीक है, बिल्कुल आप करें, डन कर दें, डन कर दें बस। अब वहां जाएं, ज़ोथेरो डेस्कटॉप पे जाएं, ओके, अभी दो फाइलें आ गई, एक पीडीएफ, एक ये, वो हम बाद में बताऊंगा कैसे मल्फाज पर मल्टीपल फाइलें आ गई आपके पास, तो मर्ज हो जाती है, कोई इशू नहीं है, वो आप मर्ज कर देंगे सारे एक्स्ट्रा फाइल, आप पीडीएफ खोलें तब पीडीएफ यहीं पर ज़ोथेरो के अंदर ही खुल गई, इसको छोड़ देते हैं। अगेन आप उस पे आए, मैनुअली अपलोड करें कोई आर्टिकल, या गूगल स्कॉलर में जाएं, वो दो तीन फाइलें और अपलोड करें। आप मल्टीपल सोर्सेज से आर्टिकल अपलोड कर सकते हैं ज़ोथेरो के अंदर। आपके पास एक आर्टिकल या आपके पास अपनी लाइब्रेरी में ज़ोथेरो तक नहीं था मौजूद, लेकिन ज़ोथेरो के आने के बाद आपके पास कुछ 100 आर्टिकल्स हैं मैनुअली पड़े हुए डाउनलोड में, आपने वो सारे आर्टिकल यहाँ पर आप मैनुअली डाउनलोड में जाकर ज़ोथेरो में जाएंगे तो सारे आर्टिकल आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। ज़ोथेरो खोल के दिखाएं, मैनुअली मेरे डाउनलोड में आएंगे तो वहाँ कुछ आर्टिकल रखें, आप मैनुअली भी अपलोड करके दिखा दें हमें। ऊपर जाएंगे, देखिए इस बिल्कुल ये भी आप बुक आर्टिकल, जनरल आर्टिकल क्लिक किया मैंने, इसको ये एचडी में आप आर्टिकल अपलोड में जाके वो जो अटैचमेंट है उसमें डायरेक्टली अटैचमेंट हो जाती है। हाँ, जिससे अटैच कर लें, फाइल अटैच करें, आप ऑप्शन खुलेगा ना अटैचमेंट में, यहाँ से अब यहाँ देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं मेरे पास, मैंने क्या किया, पर ये एक आर्टिकल है, मैंने इसको अपलोड कर लिया, ये मेरे पास देखिए यहाँ आ गया, ये वाला आर्टिकल, ये यहाँ खुल गया। आप मैनुअली कोई भी आर्टिकल है, कोई भी स्पीच है, कोई भी चीज़ है, आप उस पर जाकर सिर्फ यहाँ दिखाने का, शो करने का मकसद सिर्फ यहाँ है, आपने आर्टिकल्स को देखिए, ये ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से जाएंगे, फाइलें आप बना सकते हैं, यहाँ से जाके मैनुअली जितनी चीजें आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाएं, यहाँ से आप जितनी भी सोर्सेज लिखी ना, ISBN बुक्स के ISBN नंबर है, अगर वो ओपन एक्सेस हैं, कुछ आर्टिकल के DOI नंबर निकाले उन्होंने और पेस्ट करके दिखाएं। DOI नंबर आजकल हर आर्टिकल के ऊपर DOI नंबर या इस तरह के बहुत सारे नंबर था, आपको जितने बड़े-बड़े रिसर्च जर्नल्स हैं अवेलेबल, वहां से कॉपी किया DOI नंबर, जस्ट आपने यहाँ, अगर वो ओपन एक्सेस है तो मिनट्स कुछ सेकंड्स के अंदर जो है वो ज़ोथेरो के अंदर आर्टिकल होगा। हमें कुछ नहीं, सिर्फ आर्टिकल की DOI चाहिए, अभी किसी भी आर्टिकल की DOI मिल जाएगी हमें, तो ये वहां से कॉपी मारेंगे, पेस्ट करेंगे तो वो आर्टिकल वहां खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भी करें, कुछ वेबसाइट्स खोलें, उसको भी ऐड करें, 3-4 सोर्सेज को दिखा दें, वेबसाइट जो मौजूद है, हमने जो भी वेबसाइट खोली है। अब वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट में कुछ पेजेस होते हैं, अब वो पेजेस PDF में थोड़ी होते हैं, हमने ज़ोथेरो कनेक्टर जो वेब कनेक्टर है गूगल क्रोम का, हमने उसको क्लिक करना है और अपने कंसर्न जो हमारा फोल्डर होगा, हमने उसको, उन आर्टिकल्स को, उस वेब्स को वहां पे ऐड कर देना है। तो इस तरह आपका जो लाइब्रेरी है यहाँ रिच हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी लाइब्रेरी में 100 आर्टिकल्स, जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल आर्टिकल्स हैं, अब आर्टिकल्स ढूंढना वो आपको सिखाऊंगा, अभी ज़ोथेरो का जस्ट इस्तेमाल करा के फिर मैं आपको सीड एप्लीकेशन पे ले जाऊंगा कि आर्टिकल कैसे ऐड करते हैं। ये तो एडिशन सिखा रहे हैं आप ज़ोथेरो को, तो अब यहाँ स्टॉप करके आप सीड एप्लीकेशन में खुद उस पे आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसको तो छोड़ देते हैं। ओके, ये देखिए, ये एक है लिंक मैप जो मैंने वहां बताया था आपको, शुरू में बताया था कि यहाँ की 5-6 सीड एप्लीकेशन है कि भाई इन सीड एप्लीकेशन से आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को। अच्छा, मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया है, इसमें मैंने बताया था कि मैंने अफगानिस्तान पे काम करा था, मैंने फोल्डर बनाया। अब मैंने देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अब मैंने इसको इस आर्टिकल को जो है वो क्लिक किया, देखिए ये एक आर्टिकल क्लिक किया मैंने, देखिए इस आर्टिकल के कनेक्टेड कितने पेपर हैं,
इस सारे के सारे आपके सामने सिर्फ एक और पेपर मैंने ओपन किया है, इस सारे जब आप बोलेंगे इस सारे इससे कनेक्टेड पेपर है, ईयर भी लिखा हुआ है जनाब खान ने 2019 में लिखा है, ये सारे आपस में कनेक्टेड है। इस सारे अफगानिस्तान के लोगों ने आर्टिकल लिखे, 25-30 आर्टिकल यहीं से आ गए आपके। आपने कुछ नहीं करना, हर आर्टिकल क्लिक किया। अब आपने कहा नहीं 2009 वाले जो 11 वाले दो पुराने ओल्ड आर्टिकल हैं इसको छोड़ दें। अगर आपकी स्टडी कुछ हिस्टोरिकल है, आपकी स्टडी कुछ थ्योरीज पे है, कोई थ्योरी होती है ना आईआरएस की, थ्योरी चलती रहती है, थ्योरी में क्या बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं आई है, कुछ स्कॉलर्स हैं उसने कुछ नए थॉट्स ऐड किए होंगे, लेकिन जिनकी थ्योरी होती है उस पे डिस्कशन तो भी होता है। लेकिन कुछ जैसे हमें अफगानिस्तान में काम करना है, अफगानिस्तान में अमेरिकन विड्रॉल हो गया है, बहुत सारी चेंजिंग आ गई है, तो जितने आर्टिकल चाहिए ये आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। फिर आपने उन आर्टिकल पे सर्च किया, आपने क्लिक किया, उसके मजीद पता चलेगा ये किससे कनेक्ट हो रहा है, हर पेपर किससे कनेक्ट हो रहा है, यानी उसने उसको साइट किया हुआ, उसने उसको साइट किया, कितनी साइटेशन किस पेपर की है, ये विजुअलाइज लिंक मैप्स। सर अभी एक ऐप दिखा रहा हूं, 2-3 और ऐप्स और भी हैं। इस तरह आपने आर्टिकल क्लिक किया, उसका एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने आ गया, आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, आपने कहा ये एब्स्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, आपने उसको अपने कंसर्न फोल्डर में ऐड कर दिया। सम टाइम आप बुक के मल्टीपल चैप्टर मल्टीपल हेडिंग में काम कर रहे हैं, आप एक थीसिस की मल्टीपल हेडिंग्स हैं, एक आप कुछ आर्टिकल होते हैं वो मल्टीपल पे कवर हो सकते हैं, आपने उस आर्टिकल को मल्टीपल जो जिस हिसाब से आप फोल्डर बनाना चाहें, तो आपने जो जितने काम के आर्टिकल्स हैं सारे कंसर्न फोल्डर में ऐड कर दिए। तो यहाँ से क्या हेल्प हुई आपकी कि एक पेपर आपने जो रेलेवेंट था, क्लोज था पेपर, आपने उसको सर्च किया, उसको ऐड किया इसके अंदर, और यहाँ पर मोस्टली आर्टिकल अवेलेबल है, बिल्कुल रेलेवेंट, कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल नहीं आता। वरना गूगल स्कॉलर में क्या होता है, आप वेरिएबल लिखते हैं या की टर्म लिखते हैं, 2-3 की टर्म लिखते हैं, तो गूगल में जितनी भी रेलेवेंट पता लगा जो भी उसमें है वो सारा कचरा उसमें आ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मेरे आर्टिकल सिर्फ कनेक्टेड पेपर है जिनकी साइटेशंस एक दूसरे ने की हैं, यहाँ सिर्फ वो चीजें आई, सिर्फ रेलेवेंट चीजें आई, कोई और चीज नहीं आई है। आपने इनमें से पेपर आपने कलेक्ट किए और आपने फोल्डर बना लिया, ये फोल्डर ये समझे कि जितने आर्टिकल आपने ऐड किए सारे के सारे जुटारो वहां आ जाएंगे, और वहां से मैं आपको सिखाऊंगा नोट्स कैसे और साइटेशन कैसे बनाते हैं। अभी ये वाला डेटा कलेक्शन कि आपको मल्टीपल फाइल्स कैसे अपलोड कलेक्ट करनी है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिट मैप आपको ये हेल्प कर सकती है। अगली आप ऐप खोलें ना, एक ये ऐप है इनसाइटफुल। देखिए इनसाइटफुल क्या है, ये देखिए कोई भी आप ऐप, ये मैंने एक आर्टिकल डाला हुआ है रीसेंटरिंग सेंट्रल चाइना's न्यू गेट गेम, एक आर्टिकल मैं गूगल पे गया, गूगल स्कॉलर पे मैंने गया, मैंने कहा ये आर्टिकल मेरे आइडिया के करीब था है, वहां से मैंने उसका टाइटल लिया, मैंने इनसाइटफुल में सर्च किया, ये लिखा है ना यहाँ से, यहाँ मजीद पेपर सर्च किया तो ये पेपर आ गया। अब क्या दिखा रहा है मुझे 32 साइटेड बाय 7 साइटिंग 28 सब चीजें दिखा रहा है, ओपन एक्सेस है या नहीं ये भी चीजें दिखा रहा है, और पेपर ग्राफ बता रहा है 3648 साइटेशन दिखा रहा है उसमें। मैं इसकी सारी मालूमात पेपर की नीचे जाते रहेंगे, देखें ये ग्राफ भी दिखा रहा है, ये देखें ग्राफ में इसको किसने किया है। फिर इस एप्लीकेशन की हर एप्लीकेशन के अलग-अलग फंक्शन हैं, वहां वो ज्यादा विजुअलाइज करता है या विजुअलाइज के साथ और भी चीजें दिखा रहा है। नीचे जाएं, नीचे और भी रेलेवेंट जितने पेपर्स हैं वो सब दिखाता है, और साथ में भी बता रहा है ना पब्लिश किस ईयर में हुआ है, सिमिलरिटी यानी कि आपके आर्टिकल से कितने परसेंट मिलता है और साइटेड बाय कितने हैं वो सब दिखा रहा है, और साथ में दिया हुआ है प्लस का बटन दिया हुआ है। इसका मतलब ये कुछ आर्टिकल मैंने ऐड किए हैं, जो प्लस का मतलब ये है कि ये आर्टिकल आप अपने फोल्डर में ऐड कर सकते हैं, और भी जितने रेलेवेंट आर्टिकल है ये स्नैपशॉट आपको बताती रहेगी। फिर आगे जाएंगे तो और डिफरेंट काइंड मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर, रिव्यू पेपर, उसके रेलेवेंट पूरी लिस्टें दिखाना शुरू कर देगा आपको। आप फिर अपने हिसाब से इस एप्लीकेशन से खेलते रहें और अपने आर्टिकल निकालते रहें। एक्चुअली वर्क क्या है, आर्टिकल्स की कलेक्शंस जो बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बनती है, और ये आप प्रॉब्लम अच्छा मिल भी जाते हैं, हम उसको अपनी वेबसाइट में डाउनलोड करके उसको भाई कहां रख रहे होते हैं। ये ऐप्स हमें जो है हेल्प कर रही है कि हम इसी की एप्लीकेशन में, इसी की डेटाबेस में फोल्डर बना के जाएंगे आर्टिकल को, 50 आर्टिकल यहाँ से बन गए, 50 बन गए, 30 बन गए। आपने कुछ आवर्स में काम करके अपने आर्टिकल जमा कर दिए। सारे आर्टिकल आपने ज़ोटैरो में डाले, वहां से आपने नोट्स बनाए, सारे एमएस वर्ड में डाले आपने, वो वहां से अपनी हेडिंगों में आपने कर दिए, इंडेक्स साइटेशन के साथ अपने थॉट्स ऐड किए, उसको समअप किया, अपना रिव्यू लिटरेचर आपने बहुत तेजी के साथ जो काम आपने सालों में करना था वो काम आप मंथ में और वीक्स में कर सकते हैं। फिर एक और ऐप है, ये
फ्री वाली रिसर्च हैबिट रैबिट सॉरी ये इससे मैंने एक आर्टिकल डाला है, देखें ये जस्ट अफगानिस्तान में एक आर्टिकल मैंने डाला था, उस आर्टिकल में ये उसका अब्स्ट्रैक्ट है, ये बता रहा है 1793 आर्टिकल ऐसे जहां अफगानिस्तान डिस्कस हो रहा है। जस्ट मैंने एक वेरिएबल डाला था, कीवर्ड डाला था, उसने बताया कि जनाब ये अब बस स्क्रीन थोड़ी सी ना वो मतलब क्या वो लैपटॉप में ये ना क्लियर आ रहा है, ये ग्राफ दिखा रहा है, देखें ये देखें इस सारा उस आर्टिकल से मिलता हुआ सारे ग्राफ दिखा रहा है जिस तरह लिंक मैप में दिखाया उसने। ये इसका थोड़ा फंक्शन डिफरेंट है, थोड़ा फर्क है अपने में, ऑब्जेक्टिव्स आपके सेम है कि आर्टिकल की कनेक्शंस कैसे दिखाए जाए, विजुअलाइज कैसे किया जाए, ग्राफ कैसे बने, ये ग्राफ बना रहा है। यहां आपने आर्टिकल क्लिक किया, आर्टिकल का आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, उस एब्स्ट्रैक्ट को आपने फोल्डर में ऐड कर दिया। ये ऐप की खास बात ये कि ये ऐप डायरेक्टली ज़ोथेरो से कनेक्टेड है। यहां जो आपने फोल्डर बनाया आपने तो लिखा हुआ है रिसर्च हैबिट, रिसर्च रैबिट, सॉरी रिसर्च रैबिट, ये मैंने शुरू में भी आपको दिखाया था, इसमें फ्री में दिखाया था। ये सारे यहां से इस तरीके से ये 3 ऐप्स हैं जो मैंने आपको बताई, यहां से आप कनेक्टेड पेपर जमा करके अपने फोल्डर बना के जो इनसाइटफुल ऐप है और रिसर्च रैबिट, ये दोनों ऐप्स ज़ोथेरो से बराह रास्त कनेक्टेड हैं। यानी यहां जो फोल्डर बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे ज़ोथेरो के अंदर, और वो वहां चले गए, वहां से फिर अगला फंक्शन आपको बताऊंगा। एक बार आप पूरे नेक्स्ट वन राइट साइड पे, यस ये वाला इसके बराबर है, खोल लीजिए उसका न्यू वर्जन आ गया। ये अब मैंने इसको लिखा है जनाब के ये क्लिक करें हाउ रशिया लिखा ना, हाउ रशिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया, ये जस्ट क्लिक करें, देखिए उसने मैंने क्वेश्चन लिखा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, मैंने क्वेश्चन लिखा है इसको, उसने कितने क्वेश्चन बना के दिए मुझे? 5 क्वेश्चन बना के, मैंने वही कहा ना उसको, मैंने से क्वेश्चन लिखा उसको, यानी उसने आपको आइडिया दिया आपको कि देखो इसको इस तरह सर्च कर सकते हो, इसको ऐसे भी सर्च कर सकते हो, आपकी ऐसे भी हेल्प हो सकती है। तो ये चीजें आपने अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करता है, तो ये यहाँ से भी आप है ना बहुत सारे आर्टिकल जो है वो सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। आप उसको सर्च करें दर्शक, इसको मैंने सर्च किया किसी क्वेश्चन को, किसी एक क्वेश्चन को सर्च करें आप, वो सर्च करें ना, सर्च करें, कुछ उसने क्वेश्चन बता दिए, आप एक क्वेश्चन क्लिक कर दें या अपने क्वेश्चन पे रहकर सर्च कर सकते हैं। जो आपका अपना क्वेश्चन है आप उसको इसको क्लिक करें, आप अपने वाले को या किसी वाले को क्लिक किया आपने, अब ये सर्च कर रहे हैं। उससे बताता हूँ क्वेश्चन। देखिए आपके लेफ्ट साइड पे देखें, आपने क्वेश्चन सर्च किया जो भी आपने किया है। अच्छा ये आपके ऐसा नहीं कि आपका रिसर्च क्वेश्चन है आपको सारे आंसर दे देगा, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चंस आपने जो थीसिस के हाइपोथेसिस या फिर जो क्वेश्चंस हैं उसके वो 15-20 तो पार्ट करेंगे ना, छोटे-छोटे पार्ट्स करेंगे, किसी एक पार्ट को सर्च करेंगे आप यहां पर। तो उसने क्या किया, रेलेवेंट जितने पेपर हैं लेफ्ट साइड पे जो लिखा समरी ऑफ टॉप 4 पेपर्स, समरी ऑफ टॉप 4 क्लिक करेगा, उसने क्या किया 4 टॉप पेपर की समरी बना दी विद इन टेक्स्ट, आपको जस्ट आइडिया दिया उसने भाई 4 टॉप लोगों ने क्या कहा उसके बारे में। लेफ्ट नीचे आएंगे ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल पेपर्स, आप चाहते हैं कि समरी भी आए, आप चाहते हैं आउटकम मेजर्स भी आए, जो जो चाहते हैं उसको ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली। वो जहां लिखा है ना ऑटोमेटिकली इंटरवेंशन जो जो है चीजें आती रहेंगी। और यहाँ पर जितने आर्टिकल्स हैं देखिए ये आर्टिकल आ रहा है, पीडीएफ अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ छोटी-छोटी समरी आ जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे, ये भी ऐप आपको आर्टिकल की कलेक्शन में हेल्प कर सकती है आपकी। अब देखिए ना, अब ये आर्टिकल क्या है, बिल्कुल रेलेवेंट आर्टिकल जो आपके हैं। गूगल स्कोलर में ये नहीं आती, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है गूगल स्कोलर में। गूगल स्कोलर आपको बहुत सारे 5-6 आर्टिकल दे देगा रेलेवेंट, बाकी सारे आर्टिकल जो है रेलेवेंट देगा। यहाँ से आपने पढ़ा, क्लिक किया, यहाँ से आर्टिकल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 ऐप्स बताई, इनसाइटफुल, लिटमैप, रिसर्च रैबिट और एलिसिन। ये आपको जो है आपको डेटा कलेक्शन में जी स्पेसिफिक वेबसाइट नाम एड्रेस तो ये वेबसाइट तो है ये ना, स्पेसिफिक रिसर्च वेबसाइट या जर्नल किसी थिंक टैंक का एड्रेस दे दे। नहीं, वो तो ऐसे तो बहुत सारे थिंक टैंक किसी के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या जरूरत है, तो आपको पता होगा ना मुझे क्या है। ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च आर्टिकल्स कैसे सेट करने हैं आपको।
आप या मिलियन ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स में आपके काम के आर्टिकल कौन से हैं, जितनी एप्स हैं ये आपको जब बताएंगे आपको कि आपके रेलेवेंट जितने आर्टिकल्स हैं आपने उनको कलेक्ट कर लिया तो यार आपका काफी हद तक तो अगर आप लेवल मैं आपको बताऊं मतलब ये हम बहुत सारे डॉक्टर आरएफपी लिख रहे हैं पेपर में भी लिख रहा हूं किसी रिसर्च पेपर के लिए 150 200 250 आर्टिकल जमा हो जाए मेरा नहीं ख्याल है कि आप उससे अच्छा लिटरेचर नहीं बना सकते थीसिस लिख रहे हैं अगर आपको 300-400 या मैं समझता हूं कि कोशिश तो होनी चाहिए जितने भी अवेलेबल आर्टिकल्स हैं वेबसाइट्स हैं रिपोर्ट्स हैं आप ज़ोथेरो में ऐड करेंगे सबसे पहले 500 हैं 600 हैं ताकि कोई चीज रह ना जाए आप उसको भले आपने काम के लिए नहीं मैक्सिमम डेटा जो है आपके पास उस फाइल्स का रिकॉर्ड आपको ज़ोथेरो में आ जाना चाहिए ये जो एप्स है ना ये आप ऐप सिर्फ रिसर्च पेपर रिपोर्ट्स उसको फोकस करती है बाकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं वो इसमें नहीं आती हैं सिर्फ ये रिसर्च आर्टिकल्स क्योंकि रिसर्च आर्टिकल जितने भी हैं प्रीवियस जितना भी काम हुआ हुआ है इसके ऊपर चाहे थ्योरीज है कुछ भी काम है वो सारा काम आपको यहाँ मिल जाएगा बुक्स हैं रिसर्च आर्टिकल्स हैं बाकी वेबसाइट्स हैं रिसर्च थिंक टैंक्स रिपोर्ट्स हैं वो गूगल करके आप जो है ऐड कर सकते हैं गूगल करके आप वहां से ज़ोथेरो असल अच्छा ये चीजें 3-4 ऐप्स की सीड एप्लीकेशन कहते हैं सीड एप्लीकेशंस सही है इसमें से 3 ऐप्स बिल्कुल फ्री है इनसाइटफुल एलिसेंस और रिसर्च रैबिट ये 3 ऐप तो बिल्कुल फ्री है वो भी जो लिट मैप है वो भी काफी हद तक फ्री है पर एक दिन में आपने अगर बहुत ज्यादा आपने सर्च आउट किया तो वो क्या कहेगा नहीं आज का आपकी वो पूरा हो गया या मंथ का पूरा हो गया पैसे दे दो मजीद करें क्योंकि वो फ्री से दे रहा होता है ताकि वो कहे कि आपकी ऐप इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ताकि आप बाय करें और फिर जो है अपना काम करें तो ये 3 ऐप्स हैं ये भी आपको बहुत हेल्पफुल है हम जो है इनको इस्तेमाल करके अपना काफी हद तक अपने जो रिसर्च पेपर्स हैं वो हम सर्च कर सकते हैं सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपना नेक्स्ट जो काम है हम कर सकते हैं यहाँ से कोई क्वेश्चन इस पे करना हो करें तो ज़ोथेरो पे आप कुछ फंक्शंस में बताऊंगा ताकि फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाए इस पे कोई क्वेश्चन करना हो सर आई वांट टू आस्क कि स्पेसिफिकली मैनेजमेंट साइंस का स्टूडेंट है तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे बिल्कुल ये एप्स रिसर्च आर्टिकल्स की किसी सोशल साइंसेस की नहीं है यू कैन सर्च मैनेजमेंट साइंसेस मेडिकल के एक दो पब मैक्स भी हैं लेकिन यहाँ पर तो सारे रिसर्च पेपर्स की बात हो रही है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है आप मैनेजमेंट साइंसेस का उसमें लिंक मैप में डालें रिसर्च पेपर में डालें आपने कीवर्ड या गूगल स्कॉलर में एक आर्टिकल लिख लें ये आर्टिकल्स मेरे किसी क्वेश्चंस के या हाइपोथेसिस के किसी करीब का है आपने उस पेपर डाला पेपर ने खुद ऑटोमेटिकली ग्राफ बना दिया विजुलाइज कर दिया कि जनाब ये पेपर आपने सिलेक्ट किया है इसके रेलेवेंट को 50 पेपर उसने दिखा दिया आपने हर पेपर को इंडिविजुअल सिलेक्ट उसका ऑफसेट पढ़ा आपने अपने फोल्डर में उसको ऐड करते गए फिर मजीद उससे मजीद नया ग्राफ बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस पे आगे ग्राफ बना के कैसे कनेक्ट करते जाते हैं सिलेक्ट करती है जितने पेपर आपने 25-30 सिलेक्ट किए आप उसका नया ग्राफ बना लें उस ग्राफ से रेलेवेंट कितने पेपर है तो उस मजीद आप डीप में जा सकते हैं कि भाई इससे इसको किसके सर्च किया है इसका ऐड किया है इसको इसने साइड किया इसको इसने साइड किया आपने पूरे एक सर्कल बन जाएगा आपको कि आपको 100 आर्टिकल मिल जाएंगे सिलेक्टेड ये पेपर कनेक्ट कैसे है आपस में ठीक है ना हम भी अगर थीसिस लिखते हैं तो 100 200 300 लोगों से जो है वो साइटेशन करते हैं आपने साइड किया कुछ लोगों जिनको आपने साइड किया उन्होंने भी कुछ लोगों साइड किया इसलिए पूरा ये ग्राफ जो है वो कनेक्टेड को दिखाते हैं कनेक्शंस क्या है पेपर्स के आपस में ये एप्स का ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ इन ऐप से सिर्फ आप अपने रिसर्च आर्टिकल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करने में आपकी आसानी होगी गूगल स्कॉलर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ सिर्फ रिसर्च आर्टिकल रेलेवेंट क्वेश्चन ये होगी कि पूरी कोशिश होती है कि रेलेवेंट पेपर ज्यादा रेलेवेंट जब कनेक्ट की बात कर रहे हैं कनेक्शन का मतलब यही है कि ये मैंने आपको साइट किया जिसने साइटेशन किया होता है सिर्फ वो पेपर शो कर रहा होता है बाकी नहीं कर रहा होता So my question is if we are saving the data in these sites or app, so sir, how long it would be available on that? Like there is upgradation process of देखें सबसे पहले काम ये करना है आपने जब आप आर्टिकल 100 200 सेलेक्ट कर लिए स्कोरों से ज़ोथेरो में ऐड करना है ज़ोथेरो लाइब्रेरी में वो आपकी अपनी जो हार्ड डिस्क है ना आपका स्पेस है लैपटॉप का वो यूज करती है वहां वो सेव हो जाएगी आर्टिकल लेकिन ज़ोथेरो कनेक्शंस दिखा वो पूरा टाइटल से शो कर रहा होता है वो आपको बताते हैं आपको तो यहाँ से जितने आर्टिकल आपने वैसे तो ये सेव रहता है अब अपने मिलियन ऑफ आर्टिकल जमा करेंगे तो आपको क्योंकि फ्री वाली ऐप से वो तो बहुत हेल्पफुल है कुछ और है वहां लेकिन वो सारे आर्टिकल हैं फौरन से आपने आर्टिकल दिखा मेरे काम के वो सारे आपने ज़ोथेरो में ऐड करने हैं सबसे पहले काम तो करना है ऐड करने का असल काम आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे आर्टिकल मेरे एक डेटाबेस में ऐसा कोई हो जहां सारे के सारे 100 200 आर्टिकल जमा हो जाए और वहां से आप नोट्स बनाएं वहां से आप खेलें फिर आप रिव्यू लिटरेचर बनाने का काम शुरू होता है वो ज़ोथेरो से शुरू होता है ये काम पहले होगा पहले तो आप एप्लीकेशंस अपनी रिसर्च आर्टिकल कलेक्ट करते हैं पहले आप रिसर्च आर्टिकल कलेक्ट करेंगे उसको ज़ोथेरो में लेके आएंगे
ये जो ये लैब तो नहीं, लेकिन जब ये आप आर्टिकल खोलेंगे तो इट्स मीन कि वो भी आप क्रूम कनेक्टर से आप ज़ोटैरो ले लेंगे, वहां से आप जाएंगे लिट मैप में रिसर्च रैबिट में, वहां रिसर्च रैबिट डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो फोल्डर आपने रिसर्च रैबिट में बनाया वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा ज़ोटैरो के अंदर। ये ऑप्शन ज़ोटैरो ने उनको आपस में अवेलेबल है, तो वहां आपको ट्रांसफर करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका लिट मैप में जो आर्टिकल है वो सिंक नहीं होते, कोई मसला नहीं है, आपने वहां पर आर्टिकल सिलेक्ट किया, ऊपर कनेक्टर में गए तो वो जितनी फाइलें हैं टाइटल्स हैं वहां पर ऐड हो जाएंगे, वहां से आप फिर उसमें ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके दो सवालों में मैं आगे ज़ोटैरो पे आता हूं, सीट पे जी। रिगार्डिंग दैट कि आपने अभी मुझे ब्रीफली बताइएगा, जैसे आपने अभी बताया था कि आप ज़ोटैरो पे जाइए और अपने रेलेवेंट आर्टिकल्स वहाँ सेव करने सम सॉर्ट ऑफ एक अपनी लाइब्रेरी बना दीजिए। देन आपने क्या कहा था वर्ड पे जाने वाले, मैं आपको आपसे कुछ ही कर रहा हूं, पहले सीट एप्लीकेशन कुछ पूछने पे मैं 5 मिनट में। अच्छा बस मैं आपको बजने में तो आप बस सब एडजस्ट कर लीजिए, बस मैं कर लूं, और कुछ सीट पे कोई क्वेश्चन है हम उस पे फाइनल पे जाते लेकिन हैं। आपका लेक्चर जो ना बड़ा इंफॉर्मेटिव है, इवन मेरे लिए भी, सबके लिए, तो आप 5-10 मिनट अगर देना चाहें। थैंक यू। इस पे सीट पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अब आ जाते हैं एमएस वर्ड उस पे ज़ोटैरो पे आते हैं। देखिए मैंने ज़ोटैरो खोला, मेरे पास मैंने अफगानिस्तान पे मेरी बहुत सारी फाइलें हैं, मैंने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गया, मैंने पीडीएफ को ओपन किया, आप कुछ नोट्स बना रहे हैं इसमें, तो ये रिसर्च आर्टिकल एग्जांपल कुछ आर्टिकल है, एग्जांपल आपने 15 आर्टिकल को गूगल पे देखिए, ये उन्होंने दाशाब ने एक आर्टिकल खोला है, अब देखिए ये फाइल खुल गई। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम पीडीएफ फाइलें ड्रॉप एडिटर में खोलते हैं, वहां से नोट्स बना के कॉपी पेस्ट करके वहां डालते हैं, यहां से अब नोट्स बनाए यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपने आप सेट में कोई 3 लाइनें आपने कहा कि देखिए मैं बिल्कुल यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, जब आर्टिकल खोलेंगे ना आप कोई भी, तो आपने ये वाला ऑप्शन दबाया, फिर आपके ऊपर ये 4 ऑप्शन है, ये चारों काम के हैं, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, इन ऑप्शंस का है से ही सारा मामला। आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा ये आर्टिकल्स, मैंने कहा यार इस फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में तस्वीर है, पिक्चर है, कहीं पर कोई इधर है तो मैं दिखाता हूं आपको, पिक्चर है तो एनोटेशंस तो समझते हैं ना आप लोग, अक्सर बुक मार्क करते हैं आप लोग, तो ये ज़ोटैरो वो काम भी करता है। आप कोई भी मार्क कर सकते हैं, कलरफुल मार्क कर सकते हैं कि ये रेड कलर का मतलब ये हाई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपने इस तरह की एनोटेशंस भी बना सकते हैं। ये चारों जो काम है, चारों ये ऊपर वाले चारों, इन चारों काम जो है एनोटेशंस बनाना है, आपने कहा आपने हाईलाइट कर दिया उसको, ये एनोटेशन बनती रहेगी, जो काम उस पे करते रहेंगे, सिलेक्ट करते रहेंगे, एनोटेशन बनती रहेगी। मैंने कहा नहीं, इस पे ना इस आपकी पूरा आर्टिकल, ये पूरा पैराग्राफ का पेज नंबर है ना, इसको मैंने कहा इस पूरे उसको सिलेक्ट कर दिया, अब आ गया, मैंने इस पे कुछ कमेंट्स कर दिए, ठीक है ना, ऐड कमेंट्स, आपने कह दिया कि ये मेरे इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, या मैं कहीं यूज कर सकता हूं, कुछ भी आप एक्स वाई जी, एक आर्टिकल में मल्टीपर्पस काम कर सकते हैं, ये आर्टिकल में कुछ नई सेटिंग, ये इसकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिसर्च मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अपने रिसर्च मेथड में डिस्कस कर सकती हूं, साइट कर सकता हूं, ये आपने कर लिया। यहाँ आपने इसको टोटल सेलेक्ट कर दिया, एक ऑप्शन इसमें आता है, अगर इसमें पिक्चर है, कोई ग्राफ है, कोई टेबल है, आप उसको कैसे कॉपी करें, तो यहाँ पर ये भी ज़ोटैरो कहता है जनाब आप इसको क्लिक करें, ये वाला, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आप जो पूरी पिक्चर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एनोटेशन में लाइव सेट कर दिया। फिर आपने कहा नहीं मुझे ना ये काम भी साथ साथ कुछ होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ सेट करना है, वो आप कलर कोई बना ले, मैंने इसको क्लिक किया, अब मैंने ओके ठीक है, मैंने इसको जितनी लाइनें सेलेक्ट की आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक पे आपके आ जाएगा ऐड टू नोट, ऐड टू नोट आ गया। अब ऐड टू नोट पे देखें आप, इन टेक्स्ट साइटेशन साथ आ रही है,
बट 2015 पेज नंबर आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे आर्टिकल्स में इंडेक्स साइटेशन में पेज नंबर यूज नहीं करते, आप पेज नंबर रिमूव कर सकते हैं। ये तो ये लेकिन आपको पूरा पेज नंबर पूरी डिटेल देगा, आपको पूरा एड्रेस देगा, कहां से लिया, किस पेज से लिया, सब बता देगा। जितनी लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपने जितनी एनोटेशंस हैं, आप चाहे तो जितनी एनोटेशन है, आप इन एनोटेशन को भी पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देखें, जो आप एनोटेशंस को भी आप पूरे के पूरा जहां जहां आप नोट्स बनाएंगे, मैंने जहां जहां फॉर एग्जांपल ये ऐड नोट करता गया, फिर मैं क्रोम पे गया, मैंने क्रोम पे कहा, जब कभी क्रोम पे सर्च करने का मेरे का आर्टिकल वहां नजर आया मुझे, अब देखिए यहाँ को कोई भी चीज मैंने खोली, न्यूज खोली, इस न्यूज में मैंने कहा ये इस न्यूज में ये चीज काम की है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखा सेव्स टू ज़ोटैरो, पहले उसको सेलेक्ट कर लें, मैंने एग्जांपल में गया, उसको सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इसको सेव टू ज़ोटैरो में गया, सेलेक्ट कर लिया। अब ये इस तरह की जितनी चीजें आप जो है आप वेबसाइट से और वहां जो आर्टिकल मौजूद हैं सारे जमा कर लिया। अब आप आगे इसमें एमएस वर्ड खोल लिया आपने, बस 5 मिनट बस, ये आखिरी काम है। मैंने एमएस वर्ड खोला, मेरे एमएस वर्ड में ज़ोटैरो ऑलरेडी सेव है, जब आप प्लगइन करेंगे ज़ोटैरो तो आपके पास भी आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ गया, यहाँ देखिए ज़ोटैरो का ऑप्शन आ गया, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड साइटेशन, ऐड नोट, ऐड बिब्लियोग्राफी। मैंने नोट्स बनाए थे वहां पर, एमएस वर्ड तो मेरा आखिरी वाला काम है, वहां जितने नोट्स बनाए आपने और 100 आर्टिकल पढ़ के 100 नोट्स बना लिए आपने, वो ऑटोमेटिक सेव हो रहे थे। यहाँ मैं गया, मैं ऐड नोट में गया, यहाँ आपने जो भी बिब्लियोग्राफी जिस पैटर्न पे जो आपने स्टाइल ड्रॉ करना है यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया आपने। फॉर एग्जांपल मैंने वहां से देखता हूँ, इसको आप चाहे डबल फाइल खोल सकते हैं, डबल विंडो खोल लिया आपने ज़ोटैरो को इसकी, ताकि आपको आसानी हो जाएगी आर्टिकल्स कौन कौन से। अब यह है अच्छा, ये तो एक चीज तो जितने भी ऐड नोट्स होंगी फाइल आप ढूंढनी पड़ेगी आपको, फाइल ढूंढेंगे तो फाइल वहां आपकी है, उसी नाम से आपको सर्च करके
ठीक है, खैर यहाँ पर ना ये गूगल शेयर, अच्छा जितने भी ऐड नोट पे जाएंगे आपने उस फाइल का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने एक फाइल सेलेक्ट की थी, देखिए जितना मैटर मैं सेलेक्ट किया सारा मैटर उसने खुद आ गया। हर फाइल के नीचे ना वो इंडेक्स साइटेशन भी आ जाती है, देखिए ये आ गया, देखिए इंडेक्स साइटेशन आप सेलेक्ट करेंगे, इंडेक्स साइटेशन आ गई। यहाँ आप वहाँ पर आप जब नोट्स बनाने लगे तो नोट्स में हर पॉइंट्स पे हर पैराग्राफ में आप ये ऐड कर सकते हैं कि ये मैंने नोटेशन में डालना है, ये मैंने फला हेडिंग है मेरी, जो आप समझते हैं जो पैराग्राफ जिससे रेलेवेंट है वहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ सेलेक्ट की, ये जितने पैराग्राफ है सारा मैटर सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ मैंने साइटेशन ऐड करनी है, ऐड साइटेशन में गया, गूगल में जो साइटेशन है मैंने कहा ये आर्टिकल फॉर एग्जांपल, उसने साइटेशन कर दी। फिर मैंने कहा यहाँ एक साइटेशन, एक साइटेशन एक हो गया, मैंने जो भी मेरे पास लाइब्रेरी में, लेकिन लाइब्रेरी में आर्टिकल मौजूद होने चाहिए। देखिए अब्दुल अहद आ गया। इस तरह जितनी साइटेशन में चाहूँ मैं ऐड करूँ इसके अंदर ऐड साइटेशन की लाइब्रेरी में आर्टिकल मौजूद होना चाहिए, एक इंडिविजुअल साइटेशन। लेकिन नोट्स ऐड नोट्स हैं, जितने नोट्स अब हम बनाएंगे ऐड नोट में उस आर्टिकल को या उस ऑथर को सेलेक्ट करेंगे तो इस यहाँ पर वो आप बराबर में दो विंडो खोल के आप कर सकते हैं, ज़ोटैरो खोल लें, बराबर में जो एमएस वर्ड खोल लें, उस फाइल सेलेक्ट करते हैं, जितने नोट्स आपने वहाँ बनाए हैं वो सारे नोट्स यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हर इंट्रोडक्टरी जो भी आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया उस पैराग्राफ पे आप कमेंट डाल सकते हैं कि ये, ताकि आपको जब एमएस वर्ड में नोट्स दें तो आप बता दें कि ये मैंने इसको वहाँ यूज करना है, थ्योरी भी यूज करना है, मेथड भी यूज करना है, ना हेडिंग यूज करना है, ये तो ये नोट्स ऐड होंगे, नोट्स ऐड से ऐड होंगे। इस तरह ये जो ऐड साइटेशन है, जो साइटेशन आपने जहाँ ऐड करनी है इंडिविजुअली अपने पैराग्राफ में से लिए तो आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। जितने नोट्स आपने ऐड किए मैं एंड में गया मैंने जितनी यहाँ यूज करूंगा ना साइटेशन, तो सारी साइटेशन देखें मैंने 4 साइटेशन यूज की है। चारों साइटेशन जो मैंने प्रेफरेंसेस में जाकर जो मेथड यूज किया था उस सारी अभी देखें 4 सोर्स यूज किए, चारों सोर्स यहाँ पर आ गए। और पहले क्या किया मैंने सीड एप्लीकेशन से जितना भी रिसर्च मटेरियल है वो सारा का सारा मैंने जो मुझे विजुलाइज हुआ, जो ग्राफिक्स करेक्ट पेपर नजर आए वो सारे के सारे पेपर मैंने ज़ोटैरो में ऐड किए। देन जो है ज़ोटैरो मैंने नोट्स बनाए या एनोटेशन का यूज किया, वहाँ ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, कुछ भी है आपने नोट्स में जब ऐड कर ली सक्सेसफुली तो यहाँ पर एमएस वर्ड में आपने आगे 3 ऑप्शन है। ऐड नोट्स, सबसे पहले ऐड नोट का यूज करना है आपने। ऐड नोट्स में जहाँ जिस आर्टिकल के नोट्स यहाँ इंपोर्ट करने हैं आपने वो आपने सारे इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद जब उसके साथ हर पैराग्राफ के एंड में साइट इंडेक्स साइटेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन जो जब वेबसाइट से आप उठाएंगे ना मैटर उस पे इंडेक्स साइटेशन को देख लीजिएगा, सम टाइम वो इंडेक्स साइटेशन वहां यूज नहीं कर रहा होता। उसका क्या सॉल्यूशन है, जैसे आपने उस रिसर्च आर्टिकल को सिलेक्ट किया, ऐड नोट में गए, उसने इंडेक्स साइटेशन नहीं लगाया तो कोई मसला नहीं, आपने ऐड साइटेशन उस पैराग्राफ एंड में लगाया, उसी की ऑटोमेटिकली ऐड साइटेशन आ जाएगी। एंड में आप बिब्लियोग्राफी ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी उसी की जनरेट होगी जो उस वर्ड की फाइल में आपने जितने भी इंडेक्स साइटेशन यूज करेंगे सिर्फ वही करेगा। वो जो स्टाइल का वास्ते दोबारा प्रेफरेंस में जाए, वो दोबारा से जाके यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस लिखा हुआ है उसको चेंज कर लें, एमएलए पीएलएच का वो जो भी आपने यूज करना है वो कर सकते हैं। तो ये है ज़ोटैरो का इस्तेमाल आप करेंगे। तो बाकी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, चीजें मौजूद, जस्ट आप यहाँ ऑब्जेक्टिव पूरा सिखाना ही था, जस्ट इंट्रोड्यूस करवाना था कि आप कैसे अपना रिव्यू लिटरेचर या किसी आईटी में जाएं, ये वाला पार्ट कैसे मुकम्मल करें। तो क्वेश्चन तो कर सकते हैं आप लोग जी। हाँ देखें मैंने ये कहा था कि बहुत सारी फाइलें जो है कुछ फाइलें एक्सेसिबल नहीं होती, ओपन एक्सेस नहीं होता। मैंने कहा था रिसर्च गेट में क्या होता है कि तमाम दुनिया भर के स्कॉलर्स वो अपनी फाइल्स को बड़े नाम कमर्शियल पैसे कमाने वाले नाम नॉर्मली स्कॉलर जो है वो अपने आर्टिकल का पीडीएफ वहाँ रिसर्च गेट में academia.edu में अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं या गूगल में जर्नली भी सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली आर्टिकल मिल जाते हैं, ओपन एक्सेस जो नहीं अवेलेबल उनके आर्टिकल मिल जाते हैं। जिनके नहीं मिलते उसको छोड़ देना होगा। अगर आपने भी उसके बावजूद अगर एक रिसर्च पेपर के लिए लिटरेचर लिखने के लिए 200-250 आर्टिकल मौजूद है, मेरा ख्याल है 200-250 आर्टिकल का मतलब ये है कि आपके पास रिच लिटरेचर व्यू का जो है बैकग्राउंड मौजूद है। जब लिटरेचर व्यू का मिल जाएगा तो उसके अपने थॉट्स को ऐड करना, सम अप करना, समराइज करना, फिर उसको रिव्यू लिटरेचर अकॉर्डिंग टू अपनी हेडिंग डालना मेरा नहीं ख्याल मुश्किल काम है। ज़ोटैरो को बोले नोट्स बना देगा आप जी।
Suraj, not just his student, I'm also the assistant coordinator here at Lincoln Corner PACC. तो एक चीज आपकी बात में मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ कि इस मामले में लिंकन कॉर्नर्स आपकी ये मदद कर सकते हैं कि वी प्रोवाइड यूएस रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूएस स्टेट लाइब्रेरी है, जो अमेरिका की वजारत खारजा की मुकम्मल लाइब्रेरी है, हम उसका फ्री जो है वो एक्सेस देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके क्रेडेंशियल्स आपको घर ले जाने के लिए नहीं मिलेंगे। जो हमारे यहाँ पे सिस्टम्स हैं, आप उस पे आके वो फ्री ऑफ चार्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जेस्टर वगैरह हो गया, प्रोक्वेस्ट हो गया, और सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह नहीं, पूरे पूरे थीसिस आपको उस पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसका सीधा सा हल ये है कि आप आके अपना जो है वो आपका जो भी आप इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज, फॉर एग्जांपल आप अपना गूगल का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, आप उससे लॉगिन कर लें। ठीक है, हम आपको ई स्टेट लाइब्रेरी का जो है वो एक्सेस दे देंगे, आप उससे इस्तेमाल करें। आपको जितने आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल 250 200 आप एक दिन में 25 के वो 25 आप डाउनलोड करें, वहीं उसी सिस्टम से आप वो अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दें और अपने घर से एक्सेस करें। ये सिर्फ यही सिर्फ यही लिंकन कॉर्नर कराची और लिंकन कॉर्नर पीएससी कहीं पर भी लिंकन कॉर्नर जहां पर भी। तो ये आप लोगों का एक मसला हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। यानी कि डेटाबेस मौजूद है। हाँ, हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, वो पेड है, आपको पैसे नहीं देते, वो हम देते हैं। जी स्टोर अक्सर पैसे वाला होता है, एक्सेसिबल। हाँ, डॉक्टर साहब, we have noted almost everything, we tried our best. लेकिन कोई चीज मिस हो जाए तो would you like to suggest कि कोई वीडियो ऐसी? देखें, बहुत सारी आप जस्ट आफा ज़ुदारों में नोट्स नहीं बन रहे हैं। हाउ टू मेक ए नोट्स आप लिखें गूगल में, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने कमर्शियल लोग जो पैसे कमाते हैं और वो चीजें अवेलेबल है, वीडियोस मौजूद हैं। छोटी-छोटी जो चीज आप प्रॉब्लम कर रहे हो उसको लिखें गूगल में, गूगल आपको उसका आंसर दे देगा। मैं बताऊं आपको, दुनिया भर की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों ने ज़ुदारों के इस्तेमाल पर पूरी प्रेजेंटेशंस जो हैं वहां अपलोड की हुई है। हार्वर्ड वालों ने, येल ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने वहां से एक-एक, लेकिन जब आप यूज करेंगे ना तो जहां स्टक होंगे ना उसको सर्च करेंगे, तो यूज करेंगे, एकदम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए मसला हल हो जाएगा। आपका टाइम ज़्यादा ही है। Thank you so much. Thank you. Okay, so this was Dr. Piotr, who was inciting us with the concept and with the process of literature review, which is the backbone as far as research is concerned. And he was telling us about the different softwares which comes under the umbrella of artificial intelligence, like Zotero, Seed, Illicit, Rabbit. So thank you, Dr. Staff. Thanks a lot. Now this is time that we will have a break for almost 40 minutes. Okay. By 2 o'clock we come back here. So in 40 minutes you have to do the in 50 minutes you have to do your lunch and also prayer break. Yes. Okay. अच्छा, 2 बजे मतलब है 2 बजे हमारे स्कॉलर हैं वो लाइव होंगे। हाँ, वो चेक रिपब्लिक से जल्दी नहीं चाहिए तो वो लाइव होंगे 2 बजे वो फिक्स स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर 5 मिनट पहले ही आपको 5 मिनट पहले you have 45 minutes please. ठीक है, तो जिन्होंने लंच की सेशन की है वो अपना लंच का इंतजाम कर लें। आप लोग देख लें, हमने भी उसी बाकी आपकी बड़ा किया। One more thing, कॉर्नर के अंदर किसी किस्म का फूड आइटम लाने की इजाजत नहीं है। बराबर। हाँ, बराबर वाले रूम में आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। जो लेने खाना लेके आएंगे वहां आगे लेके साफ खाना करके खाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे प्लीज। ठीक है, नॉट इवन टी और एनी सॉर्ट ऑफ जूस, पानी के अलावा कुछ नहीं आ सकता। जी जी बस इन्होंने लिखी करो जगह दी है हाँ हाँ आपका नाम क्या है?